Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning. Shrikant sir, are you there? Hello. Hello, I am here. Hello. Sir, are you Are you there? Yeah, I am here, ma'am. Okay. Yes, madam. Sir, करायचं का start? Guest join झाले आहेत का? Let me check. Oh, madam, we will start with the Dhanvantari Stavan. Sir has joined the program. Okay, sir. Let us start with the Dhanvantari Stavan. Okay, sir. With the blessing of Lord Dhanvantari and with the permission of respected principal, sir, I am going to start the first session of the day. Now I request all the participants to please join Dhanvantari Stavan. Please close your eyes with folded hand. Now we recite upon the verse praising Lord Dhanvantari. मैडम वीडियो प्ले नहीं होता है. Start the sound sharing. वंदित पाद पद्मं लोके चरा भयमृत्यु नाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भे सूक्ष्म स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारु पीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवन प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं. Thank you, everyone. Today we have 6 sessions. Now we are proceeding toward our first session, motivational self-biography and motivational lecture by Dr. Dhanraj Gaukar sir. I feel extremely honored to introduce the guest of our program, Dr. Dhanraj Gaukar sir. Sir had done the BMS graduation from Government Ayurved College, Nagpur. Sir had done the post-graduation MD in Rasashastra and MD in Panchakarma. Sir is a managing director of Samadhan Ayurved Panchakarma Hospital and Research Center, Nagpur, and Gaukar's Ayurved Dham Hospital, Shankarpur, Wardha Road, Nagpur. Sir is a guru in Guru Shishya Parampara in Rashtriya Ayurved Vidyapit, National Academy,
of Ayurveda, Ministry of Ayush, India. Sir is an honorable consultant in abroad, Ashwamedh Academy of Ayurveda and Panchakarma, Heidelberg, Germany, and Centrum for Ayurveda, Medicine and Panchakarma in Germany. Sir had presented the many national paper presentation in various conferences in India, and also presented the international paper, also had presented the paper in international conferences, the International Congress on Traditional Asian Medicine in Halle, Germany, the effect of Vamana and Virechana therapy in management of Tamak Shwas, and in European Ayurveda World Congress in Germany, the role of Panchakarma in management of sciatica. Sir has many activities in academy, like postgraduate diploma in clinical Panchakarma, diploma in Ayurveda for foreign student, reorientation courses of Panchakarma. Sir is a member of various foundation and committees, president of Dr. Gahukar Education and Research Foundation, Nagpur, executive director of Ashwamedh Academy of Ayurveda and Panchakarma, Heidelberg, Germany, executive director and joint secretary of National Academy of Panchakarma and Research in India, member of International Congress on Traditional Asian Medicine in Germany. Sir have many awards and honors. So welcome such renowned personality to our program. May I request Dr. Gahukar sir to guide our newcomers and enlighten their path. नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। आदरणीय, आज प्रथम मैं भगवान धन्वंतरी को प्रणाम करते हुए आचार्य चरक, सुश्रुत, वाग्भट, काश्यप, टीकाकार और अन्य जिन्होंने आयुर्वेदिक क्षेत्र में ऋषितुल्य अर्थात साइंटिस्ट के रूप में जो कार्य किया है, जो 5000 वर्ष पूर्व उन्होंने जो लिखा हुआ है, आज भी वो अकालबाधित सत्य है। इन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आदरणीय जायसवाल मैडम जी एवं हमारे डायनेमिक प्रिंसिपल डॉक्टर वाघे जी, अन्य मेरे प्रोफेसर मित्र एवं कुछ कोई पोस्ट पर लेक्चरर भी हो गए जो, एवं मित्र मैत्रिणियों। मैं विद्यार्थी इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं कुछ 42 साल पहले 42 इयर्स बैक मैं पीछे जा रहा हूं। मुझे जो विषय दिया गया है वो विषय मोटिवेशन टू न्यू कमर्स, न्यू स्टूडेंट्स। मेरी क्या क्या उपलब्धि है, मैंने आयुर्वेद में एडमिशन लेने के बाद मैं क्या क्या कर पाया हूँ और शास्त्र में क्या क्या था, और उसका उपयोग मैं अपने जीवन में रुग्णों को ठीक करने में और विद्यार्थी को पढ़ाने में अपना ये कैसे दे सका हूँ, इसके बारे में अब मैं चर्चा करूंगा। 42 years ago मैं जब इस दो राह पे खड़ा था, 3 मार्च से मेरी MBBS में एडमिशन चली गई और मुझे आयुर्वेद की तरफ जाने की आवश्यकता पड़ी। उस समय मित्रांनो, अब मित्र इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपकी उम्र का हो गया हूँ, आपसे मुझे बातें ऐसी करना है कि एज ए सक्सेस प्रैक्टिशनर करके मुझे बात नहीं करना है, मुझे बात करनी है आपको मित्रत्व के दृष्टिकोण से कि हमारे आयुर्वेद में हम कैसे किस तरह से अचीव कर सकते हैं। इसलिए मैं आपकी उम्र का होकर आपसे बात कर रहा हूँ। आप प्लीज मुझे सक्सेसफुल प्रैक्टिशनर या कोई बड़ा व्यक्ति ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा। तो 42 साल पहले ऐसी स्थिति आई थी कि जो हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि पहले MBBS में एडमिशन मिले और कोई सर्जन या कोई उसी में कोई ना कोई इसमें MD करे और
उसमें अपना ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा प्रदान। इस दौरा पे जब हम थे, उस दौरा पे जो 3 मार्क की एडमिशन इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज से चली गई, और उसके बाद हम ढूंढते रहे कि आयुर्वेदिक कॉलेज कहाँ होता है नागपुर में। हमें इसके पहले यही पता नहीं था कि आयुर्वेद कॉलेज भी होता है, BAMS कोर्स भी होता है, क्योंकि 7th एट द मतलब 7th वर्ष में, मतलब 7वीं से बोलिए, उस समय हमारे एक इच्छा थी कि हमें MBBS बनना है, और उसी के हिसाब से हमने अभ्यास भी किया है, और उसी के हिसाब से वही स्वप्न देखते देखते हम 12th की एग्जाम दिए, और 12th के एग्जाम में हम आए, लेकिन कुछ कारणवश हम आयुर्वेद कर पे। तो ये मिर्ची बाजार में कहीं नागपुर में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज तब पता चला जब एडमिशन नहीं मिली थी। उसके बाद श्री आयुर्वेदिक कॉलेज जो था वो महाल में था, उसके बाद जुपिटर, ये तो बिल्कुल ही नहीं थे, प्राइवेट कॉलेज उस समय बिल्कुल नहीं थे। और लोगों में ये भी पता नहीं था कि आयुर्वेदिक कॉलेज के बारे में इतना ये नहीं पता था। वहाँ पे जाकर पुड़िया वगैरह या ऐसा कुछ ट्रीटमेंट लेते थे, लेकिन वहाँ पे एजुकेशन BAMS डिग्री मिलती है, ये लोगों के बिल्कुल ही नहीं था। इस समय हमने एडमिशन लिए 42 साल पहले। आप में और मेरे में अंतर इतना ही है कि 42 साल पहले मैंने एडमिशन लिया, आपने अभी जो एडमिशन ली हुई है उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो कई लोगों को बाय चॉइस आपने BAMS में एडमिशन ली होगी, जो कि आप कुछ आयुर्वेद में कुछ अच्छा करना चाहते हो, और कुछ लोग ऐसे हुए होंगे कि जिनको MBBS में अन्य पैथी में एडमिशन नहीं लिए, उनको मतलब मन को मार के एडमिशन तुम्हें ली लेनी पड़ी होगा। ऐसे 2 प्रकार के लोग आप मेरे सामने बैठे होंगे। तो ऐसे दोनों विद्यार्थियों के लिए, दोनों मित्रों के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूं, मैं कुछ बातें करना चाहता हूं आपसे। तो पहले मैं आपको बता दूं शास्त्र के बारे में। जब मैं 42 साल से इस आयुर्वेदिक क्षेत्र में हूं, तो आयुर्वेदिक क्षेत्र में मैंने क्या पाया है, क्या देखा है, क्या सोचा है, और मैं समाज को क्या दिया है, ये मैंने जब पाया तो आज तक चरक, सुश्रुत और वाग्भट 42 साल में मैं सारे ग्रंथ पूरी तरह से पढ़ा तो हूँ, लेकिन जब भी पढ़ाने जाता हूं तो मुझे कुछ अलग ही अर्थ निकलने जाता है। अभी मुझे पिछले 7 दिन के पहले, 1 हफ्ता पहले मुझे ये मिला है कि एब्डोमिनल ट्यूमर की सर्जरी उस टाइम होती थी जिसको हम गुल्म कहते थे। जो महास्रोतस के अंतर होता है वो गुल्म का विलयन करके घटी यंत्र में लेके विलयन करके उसको शस्त्र पद्धति से निकाला जाता। वहां तक सर्जरी वहां पे इतनी प्रगत थी, लेकिन वो पूरी तरह से लुप्त हो गई है। और ऐसा कोई दुनिया में शास्त्र नहीं है जो शास्त्र हर चीज सुबह से लेकर रात को सोने तक ये सारी चीजें हमें समझाते हैं। जो साल में 3 ऋतु बदलते हैं, हर ऋतु में किस तरह से तुम्हें रहना है, किस तरह से तुम्हें लोगों को उसका अभियोग देना है, उपयोग किस तरह से प्रकार करना है। इसीलिए हमें ये जो शास्त्र है हर वक्त हर क्षण में हमें जो सिखाता है, ऐसा कोई दुनिया में कोई शास्त्र नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे यहाँ तो इस प्रकार का शास्त्र की आयुर्वेद मतलब आयुर्वेद पुड़िया है, बांधो, काढ़ा है, दे दो। इससे बहुत अधिक मतलब ये तो बात मैंने जो कही है वो बात ऐसा कह सकते हैं कि समुद्र से 1 लोटा पानी निकालने जैसी है। मैं भी कहता हूँ कि मैंने 42 साल में प्रैक्टिस की, उस समुद्र में से सिर्फ मैंने 1 लोटा पानी लिया है और बाकी आपके लिए रखा है पूरा समुद्र, आप सबके लिए। इस शास्त्र की गहराई है। जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाओगे, जैसे जैसे आप उसमें 3 बातें बहुत जरूरी है। 3 बातों में एक तो सातत्य जरूरी है, अपने पैथी के प्रति निष्ठा बहुत आवश्यक है, और उसके साथ में कोई शास्त्र के साथ पे किसी अपने शास्त्रों को कंपेयर नहीं करना है।
अर्थात अपने शास्त्रों को न्यूनगंड या न्यूनता मत समझिएगा। आप पढ़ोगे, आपकी दृष्टि वहां तक जाना चाहिए। शास्त्र ने कोई चीज छोड़ी नहीं है, लेकिन हमारी दृष्टि सोच वहां तक जाती है या नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब मैंने एडमिशन लिया बहुत नाराज हो गया। 1979 की बात है। जब नाराज हुआ भी करे क्या, डॉक्टर तो उस समय तो भूत सवार था डॉक्टर का, वैद्य का भूत सवार था। वैद्य को तो उस समय ऐसा समझ जाते थे कि वैद्य मतलब कुछ सीखा हुआ नहीं, लेकिन उसको 2-4 फार्मूले पता है और वो चिकित्सा करते हैं। इस प्रकार की प्रतिमा वैद्य में थी। डॉक्टर में ऐसा रहता था कि जैसे एप्रन पहन लिया और तुम रास्तों पे साइकिल पर भी चले तो तुम्हें नमस्कार करते थे। तो डॉक्टर बनने की उस समय कुछ अलग ही क्रेज थी। उसके बावजूद भी जब एडमिशन लिया गया और एडमिशन लेने के बाद पहला प्रश्न ये हुआ कि मैं पढ़े क्या, क्योंकि जो साइंस से आए हुए लोग हैं और साइंस से आने के बाद जब हम आयुर्वेद में एंटर होते हैं तो पहला मुकाबला हमें संस्कृत से करना होता है, जो कि हमने कभी पढ़ा भी नहीं है। शायद आप में से कई लोगों ने पढ़ा होगा, कई लोगों ने वो ऐच्छिक विषय करके लिया होगा, और कोई लोगों ने टोटली इंग्लिश मीडियम में ही 12th तक आए होंगे। तो पहला मुकाबला हमें संस्कृत से करना होता है। मैं आपको कह दूं कि हर वक्त संस्कृत के बारे में आपने सोचना नहीं है। यदि आप जब भी एडमिशन लोगे और आपका जो मुकाबला पहली बार संस्कृत से होगा या श्लोकों से होगा, सुश्रुत अष्टांग हृदय से होगा, तो आप मुकाबला होने मत दीजिएगा। जरूरी यह है कि आपको जो चीज चाहिए वो पहले करिएगा। जो चीज चाहे आपको मन जो होता है वो चीज पहले करिएगा। आपको ऐसा लगता है कि मुझे मॉडर्न नहीं सीखना था, लेकिन मैं गलती से यहाँ आ गया, तो मॉडर्न पढ़ने के लिए हमारे पास आयुर्वेद में बहुत सारे है। पहली बात हमने क्या किया था कि डिसेक्शन हॉल में जो बॉडी पड़ी हुई रहती है, तो सारे के सारे 1.5 साल का हमारा एक टर्न होता था। 1.5 साल तक हमने सिर्फ 2 बॉडी डिसेक्ट कर दी। हमारा 1.5 साल कैसे गया हमें पता ही नहीं चला। हमें ऐसा लगे कि हम आयुर्वेदिक कॉलेज में नहीं, हम मेडिकल कॉलेज में है। और जब हम कंपेयर करते थे कि मेडिकल कॉलेज के लोग डिसेक्शन कैसे करते, उससे बढ़िया डिसेक्शन हम कर रहे थे। और इसी बात उस समय जब ब्यूटी हॉल में डिसेक्टेड बॉडी का मेला मतलब सभी लोगों के लिए एक ये लगा था, तो उस समय इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और शासकीय गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, तीनों कॉलेज के डिसेक्टेड बॉडी रखी थी और हमें उस पर डेमोन्स्ट्रेशन करना था। मेरे साथ में मेरे सहयोगी डॉक्टर सोनारे, डॉक्टर चंद्रकांत चज्जन और डॉक्टर गिरेटकर, ये लोग थे। और हम चारों ने मिलके डिसेक्शन इतने अच्छे तरह से लोगों को समझा दिया कि वहां पे हमें फर्स्ट प्राइज मिला। तो 1.5 साल की हमारी उपलब्धि ये थी कि हम डिसेक्शन बहुत अच्छा कर पाए। मतलब हमारी रुचि बढ़ गई है। रुचि बढ़ने की आवश्यकता होती है। तुम्हारी रुचि उसमें है, वो उसमें करिएगा। फिर हमें रुचि लगी कि नहीं, हमें द्रव्य गुण बहुत अच्छा लगता है, पेड़ों पे चढ़ना, उसके फोटोग्राफ्स निकालना, अलग अलग जगह जाना, अलग अलग जगह से पेड़ों मतलब वृक्ष की पहचान करना, वो वृक्ष की पहचान करके उसको फोटोग्राफ्स, उसका संग्रह, कलेक्शंस अलग अलग, मतलब रूट का कलेक्शन अलग, स्टेम का कलेक्शन अलग, फ्लावर का अलग, ऐसे कलेक्शन करते करते मेरे पास 500 स्पीशीज बन गई थी, जो कि 1.5 साल के अंदर सबसे अधिक हमने उस नाम दिया था ज्योति, डॉक्टर गौकर ज्योति हर्बल हॉबी, क्योंकि इसके साथ में हर पंचकर्मा का हॉस्पिटल हो या जो भी कार्य करना हो, मेरे साथ में मेरे सहचार्य डॉक्टर ज्योति गौकर ये हमेशा मेरे साथ रहती थी। तो ये हमने ज्योति हर्बल, तो कहने का मतलब ये है कि हमें जरूरी नहीं कि हम आयुर्वेद को टच करना है कौन से एंगल से, वो आप अपने हिसाब से सोचिएगा, लेकिन अपने आयुर्वेद के प्रति निष्ठा हमेशा कायम रखना है। हमें ऐसा लगा कि मुझे, जब मैं आयुर्वेद कंप्लीट किया हूँ, फाइनल कंप्लीट किया और जो इंटर्नशिप हुआ है, मुझे ऐसा सोचा कि मुझे सर्जन बनना था, मैं क्यों नहीं सर्जन बनूं। इसीलिए मैं जानबूझकर जब सर्जरी में लिया था।
और रजिस्टरशिप भी सर्जरी में लिया था, और दोनों मिलके 3 साल तक मैं सर्जरी करता रहा हूँ आयुर्वेदिक कॉलेज में ही। सर्जरी करते करते मैं हर्निया, हाइड्रोसिल, प्रोस्टेट, एब्सेसिस ओपन करना, एरोप्लास्टी, नेजलप्लास्टी, बहुत कुछ करने लगा। अभी मेरी इच्छा थी, ये इच्छा तो मेरी जो सर्जन बनने की थी, वो सर्जन की इच्छा मेरी पूरी कंप्लीट हो गई। मैं आपको कहता हूँ, हमेशा कोर्स होने के बाद जब इंटर्नशिप होती है, इंटर्नशिप में स्टडी न करते हुए यदि आप सही में आयुर्वेद का अभ्यास करते हो तो वो सही समय है आयुर्वेदिक अभ्यास करने का। क्योंकि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तुम्हें परीक्षा देने में और स्टडी करने में ही जाता है, और इंटर्नशिप सही में पेशेंट देखने के लिए होता है और अनुभव लेने के लिए होता है। वही मैंने किया, और वो आधार पर मैंने मेरे जीवन में वो 3 साल कितने अच्छे रहे मैं आपको बता दूं। वो मेरे 3 साल वो बेसिक कोर्स रहा जो कि मैं पूरी तरह से पंचकर्मा उस आधार पर डेवलप कर पाया हूँ। उसके बाद हमें एमडी में एडमिशन मिलते मिलते हम एडमिशन नहीं ले पाए, क्योंकि उस समय की परिस्थिति ऐसी नहीं कि तुम्हें आयुर्वेद सीखने के बाद तुम्हें पैसा न मिले, घर से पैसा आना बंद हो जाता है और प्रैक्टिस तुम्हें करनी होती है। इसलिए हमने हाउस जॉब रजिस्ट्रार को ज्यादा समय दिया, ताकि एमडी हमने बाद में किया। और मेरा पहला रसशास्त्र का एमडी मैंने रसशास्त्र में किया, और उसका जो पंचकर्मा का एमडी मैंने 10 साल के बाद किया, जो 95-96 में पास आउट हुआ। तो इस प्रकार की, लेकिन करते करते जब मैं हाउस जॉब कंप्लीट हुआ मेरा, तब मैंने सोचा ये तो इसके आगे तो मुझे सिर्फ इंसिजन देना है और बंद करना है, भाई यही काम होगा, इसके आगे मैं तो बढ़ूंगा नहीं। होता तो ज्यादा से ज्यादा बड़ा सर्जन होगा, और भी सर्जन होगा, नामांकित सर्जन होगा, लेकिन मुझे एक समाधान नहीं होगा कि मैं आयुर्वेद में एडमिशन लिया हूं और मैं सर्जरी करते रहा हूं। तो मुझे ऐसा एक टच चाहिए था कि जो मैं आयुर्वेद में कुछ कर पाऊं, और तभी मेरी इच्छा जागृत हुई करीब करीब 87 में, कि 87 में मैंने मन में ठान लिया कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ आयुर्वेद के लिए करना है। और मैं टर्न हुआ उस समय, जो मेरे उस समय के कुछ 3 साल मैंने आयुर्वेद जनरल प्रैक्टिस भी की थी, और वो जनरल प्रैक्टिस करके 80 to 90 पेशेंट्स पर डे में देखता हूँ, क्योंकि घर का खर्चा निकालना था। उसके बाद मैंने जब क्या कि ये आयुर्वेदिक प्रैक्टिस, ये भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस नहीं, हम एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे, तो उसमें भी मुझे समाधान नहीं मिला, और शंका हुई कि मैं अपने शास्त्र के प्रति मैं विश्वास नहीं रख रहा हूँ, मेरी श्रद्धा कम हो रही है, और ये श्रद्धा कम हो रही है, इसलिए मैं फिर से मैं आयुर्वेद के प्रति जागरूक हुआ हूँ। और पहला थ्रू आउट इंडिया, या इंडिया नहीं कह सकते, थ्रू आउट सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया में पहला हॉस्पिटल मैंने किया, जो कि समाधान हॉस्पिटल के नाम से प्रसिद्ध था। 1991 में मेरा पहला हॉस्पिटल जो स्थापित हुआ, उस समय सेंट्रल इंडिया में और नॉर्थ में ऐसे कोई हॉस्पिटल नहीं थे। साउथ में कुछ आयुर्वेदशाला, कोट्टाकल, कोयम्बतूर, या कुछ निजी लेवल पर कुछ रिसोर्ट्स वगैरह चल रहे थे। तो आयुर्वेद में हॉस्पिटल किस तरह से होता है ये भी पता नहीं था, इसलिए महाराष्ट्र से सारे लोग, जैसे महाराष्ट्र से कुछ कॉलेज के लोग हॉस्पिटल कैसे होता है देखने अपने नागपुर में आते थे। बाकी मतलब दिल्ली से लोग आते थे, या अदर स्टेट्स के लोग आते थे। ये करते करते मैंने ये सोचा कि ये हॉस्पिटल तो खोल दिया हूँ, लेकिन मुझे ऐसे इच्छा हुआ कि मेरे पूरे जीवन मतलब 4.5-5 साल में जब मैं पढ़ा हूँ, तो मुझे ऐसा कोई गुरु नहीं मिला कि जो मुझे अच्छी तरह से पढ़ाए, आयुर्वेद को समझाए। तो मैं इस मूड में था कि हॉस्पिटल मैंने खोला है, पेशेंट मुझे मिल रहे हैं, लेकिन मन में एक ऐसी इच्छा थी कि मैं भी कुछ पढ़ाऊं मुझे जो आता है, शायद ऐसा हो कि ये प्रचार और प्रसार के लिए इसका काम होगा। और इस प्रचार और प्रसार के दृष्टिकोण से मैंने ये सोचा कि मैक्सिमम हम उस समय सेमिनार्स लेते थे, उस समय हम हेल्थ कैंप्स लेते थे। हेल्थ कैंप में इतना, अभी जैसे हेल्थ कैंप नहीं थे उस समय। हेल्थ कैंप देना मतलब एक पेशेंट को आधा घंटा देना, उनको सारी चीज समझाना, आयुर्वेद के परिभाषा उनको समझाना, डेली रूटीन उनको समझाना, और उनको इसके ऊपर इस तरह से जब देते, नहीं तो ऐसा नहीं कि दो आए उसको 2-4 टैबलेट दीजिए और चले गया, नहीं, इस तरह से हमने हेल्थ कैंप कभी नहीं किए।
सीरियसली हेल्थ कैम्प किए हैं। ये भी एक तुम्हारे पास अवसर है हेल्थ कैम्प करने का। जब भी आप डॉक्टर हो गए तो डॉक्टर होने के बाद हेल्थ कैम्प लेने का अवसर बहुत अच्छा है। अवसर मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे कैसे अवसर हमारे सामने आता है। जब मुझे लगा कि नहीं, ये सिर्फ लेक्चर देना या भाषण देना, लोगों में अवेयरनेस लाना, उसके लिए मैंने आयुर्वेद सत्संग करके एक निकाला कि मुझे आयुर्वेद सत्संग, जहाँ पे योगा के क्लास चलते थे और जहाँ और लोग चाहते थे कि हमारा लेक्चर वहाँ पे हो आयुर्वेद के ऊपर, तो वहाँ पे सत्संग के द्वारा हम लेक्चर्स देते थे। तो ये एक हमारी स्ट्रीम थी आयुर्वेद सत्संग। उसके बाद ऐसा लगा कुछ लोग आयुर्वेद के शासकीय आयुर्वेद कॉलेज महाविद्यालय नागपुर, श्री आयुर्वेदिक कॉलेज या बहुमूलक कॉलेज के स्टूडेंट्स मेरे यहाँ पढ़ने आते थे, अंडर प्रैक्टिस आते थे। और वो शुरुआत थी मेरे 92-93 से कि वो लोगों को पढ़ाना, निःशुल्क पढ़ाना, कोई फीस नहीं थी। तो निःशुल्क पढ़ाते पढ़ाते मैंने एक कोर्स इस प्रकार से डिजाइन किया, यो कोर्स में पूरी तरह से पंचकर्मा लोगों को आ गया। पंचकर्मा के बारे में इसलिए मैं ज्यादा सजगता था कि मेरा जो सर्जरी थी, वो सर्जरी में मुझे ये पढ़ाया गया था कि सर्जरी चाहे एब्सेस ओपनिंग की हो, हर्निया की हो, प्रोस्टेट की हो या लेप्रोस्कोपिक हो, जो भी हो सर्जरी, उसके लिए 2 ट्रॉली लगती है। 2 ट्रॉली पे सारी चीजें स्टेराइल रखना होती है। 2 ट्रॉली पे पूरी साहित्य होता है, जो यदि इमरजेंसी आती है उसके लिए भी औषधि द्रव्य होते, सारी चीजें होती है। तो क्यों ना हम आयुर्वेदिक पंचकर्मा के जो प्रधान प्रक्रिया है, वो प्रधान प्रक्रिया के लिए इस प्रकार की यंत्र सामग्री बनाए, इस प्रकार की ट्रॉली लगाए जो कि हमें वो ऑपरेशन जैसी ही लगे। और इसलिए मैंने शुरू किया उस समय से कि हमें जो वमान, विरेचन, बस्सी, नश्य, रक्तमोक्षण के लिए जो जो हमें यंत्र लगते थे, वो यंत्र किस प्रकार से बनाना, ये सोच हमने शुरू कर दी है। और ये सोच करते करते ये सोच हम पूरी सोच हमारी हुई है। और यंत्र सामग्री जो बाहर आई हुई है वो 1995 में मेरे वमन यंत्र, विरेचन यंत्र, बस्ती यंत्र, सर्वांग धारा टेबल जो ऑटोमेटिक चलने वाला है, जो कि मल्टीपर्पज टेबल, एक ही टेबल पर पूरी प्रैक्टिस करने वाला, तो इस प्रकार के सारे यंत्र सामग्री हमने बनाई हुई है। अभी तो हमारे डॉक्टर वेद प्रकाश है, डॉक्टर शैलेश है, डॉक्टर प्रीति गौकर है, डॉक्टर उज्ज्वला, इन लोगों ने अभी उस पर ऐड कर दी है कि विरेचन यंत्र में ये हम देख नहीं सकते, तो अब देखने की जरूरत क्या है, तो उसके बीच में कैमरा लगा दो। तो अभी हम विरेचन यंत्र जब विरेचन देते हैं तो कैमरा लगा देते हैं, तो कैमरे से हमें सारे के सारे वेग पता हो जाते हैं, रंग वर्ण पता चल जाता है, बृहत अल्पाल्प वेग पता हो जाता है, कपांत विरेचन पता हो जाता है। तो इस प्रकार का डेवलपमेंट हमने यंत्रों में किया। और यंत्रों में करने के कारण हमें जो वमन हम बकेट में करते हैं, वो वमन हम यंत्र पे करने के बाद हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी, आयुर्वेद की प्रतिष्ठा बढ़ी कि नहीं देखो वमन इस प्रकार से होता है, वहां पे बैठने की जगह है, सामने वमन यंत्र है, उसमें उल्टी करने की व्यवस्था है, मेजरिंग की व्यवस्था है, हाथ पकड़ने की व्यवस्था है, 2 बाजू में डॉक्टर्स खड़े रहते हैं, कोई अंकित करता है, लिखते हैं कि क्या क्या हुआ, कितने वेग आए। तो ये जो इम्पैक्ट है, ये इम्पैक्ट हमने लोगों को दिया है, जो पेशेंट्स को दिया, और ये इम्पैक्ट के कारण लोग आकृष्ट हुए। उस समय इस प्रकार नहीं कि आयुर्वेद को पंचकर्मों को आराम से पंचकर्म कहे, कोई तो पंचतंत्र कहते थे, कोई पंचभूत कहते थे, ऐसे नाम देते थे, समझिए कि पंचकर्मा के लोगों को मालूम ही नहीं। इसलिए मैं जो पेपर्स वाले लोग थे, वो पेपर्स वाले लोग हमारी तरफ आके आर्टिकल्स ले जाते थे। अभी तो कम से कम पेड आर्टिकल है, उस समय वो लोग कहते कि डॉक्टर हमें आर्टिकल दे दो, और हमें रात भर वो आर्टिकल लिख के उन लोगों को देना पड़ता था कि ये आर्टिकल है, और आर्टिकल की सीरीज लगती थी हर पेपर में। नागपुर पत्रिका थी, लोकमत में था, हितवाद में, बिना निःशुल्क। हमें क्यों? पंचकर्मा हमें बढ़ाना था, पंचकर्मा के बारे में लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना था। उसके लिए मैक्सिमम काम यहाँ ही नहीं, नागपुर में नहीं, मैंने मैक्सिमम काम पूरे देश में किया। कैसे देश में मैं फैल गया? देश में मुझे पंचकर्मा स्पेशलिस्ट किस प्रकार से जाना जाता है, ये मैं नहीं कहता हूँ, मेरे विद्यार्थी सारे जगह फैल गए हैं। वहां से फोन आते हैं, हरियाणा से आता है, उड़ीसा से आता है, या पंजाब से आता है, आंध्र से आता है, महाराष्ट्र से आते हैं, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, काफी कोलकाता से, सारे तरफ मेरे पेशेंट्स स्टूडेंट्स फैले हुए हैं। लोगों को सीखने की इच्छा थी,
आयुर्वेद सीखने की इच्छा थी, और वो प्लेटफॉर्म मेरे पास था हॉस्पिटल के रूप में, और हॉस्पिटल के रूप में मैं वो पंचकर्मा उनको दे सकता था। इसलिए लोगों की डिमांड जब बढ़ गई और लोगों को चाहिए था कि 15 दिन में हमें पूरा पंचकर्मा सर पढ़ा दीजिएगा शायद, और पढ़ाने के बाद हम शुल्क के साथ में पढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन आप पंचकर्मा हमें 15 दिन में 20 दिन में पढ़ा दीजिए। और मैंने इस प्रकार का एक कोर्स डिजाइन किया जिसको हम कहते हैं डॉक्टर गौकस रिओरिएंटेशन कोर्सेस ऑफ पंचकर्मा। ये 15 दिन में मैं करीब करीब एक दिन में 8 घंटे रुकने को पढ़ा, 8 घंटे स्टूडेंट को पढ़ाता, गुरु शिष्य परंपरा जैसे। लोगों के रहने की व्यवस्था हम करते थे, खाना पीना हमारी तरफ से रहता था। सुबह 6:30-7 बजे से जो प्रक्रिया शुरू होती थी, जो आयुर्वेद के रूटीन से, वो प्रक्रिया 8 बजे प्रैक्टिकल्स होना ही है, करीब करीब 1 बजे तक प्रैक्टिकल्स होना है, और शाम को 6:30 बजे से 8:30-9 बजे तक लेक्चर्स होना है। इस प्रकार से हम ये सारे के सारे, और बीच में जो पेशेंट्स आते हैं वो पेशेंट उनको दिखाना है, डेमोन्स्ट्रेटिंग करना है। तो इस प्रकार का मैंने एक कोर्स रिओरिएंटेशन कोर्सेस ऑफ पंचकर्मा ये शुरू किया, और वो शुरू करते करते ऐसे हुआ कि पंचकर्मा कोर्स शुरू करते करते हम अनजाने में काम तो कर लेते हैं, लेकिन हमें उसका फल किस प्रकार से मिलता है हमें पता नहीं है। लेकिन हम सही तरह से सातत्य से श्रद्धा से यदि काम करते हो तो तुम्हें फल उसका जरूर मिलेगा। फल तो मुझे आर्थिक स्वरूप में मिला ही हुआ है, प्रसिद्धि के रूप में ही मिला हुआ है, लेकिन जो चीज मैंने कभी सोची ही नहीं थी वो मुझे मिली है। 1999 में जब मैं रिओरिएंटेशन कोर्स लिया हूँ, तब मेरे यहाँ जर्मनी से एक स्टूडेंट्स पढ़ने आई, जिन्होंने बनारस में 1 साल का कोर्स करने के लिए वो आए थे, और एक मेरी विद्यार्थी जो एमडी के लिए बनारस गई थी, उन्होंने कहा कि पंचकर्मा यदि पढ़ना है तो कहाँ पढ़ोगे। उन्होंने तो शायद पहले ही रिजर्वेशन कर लिया था केरला का। उन्होंने कहा कि यदि तुम्हें सही में शास्त्रोक्त पंचकर्मा पढ़ना है विथ इंस्ट्रूमेंट के साथ में, तो आप नागपुर ही चले जाओ। और उन्होंने नागपुर की वहाँ का छोड़कर वो नागपुर के लिए आए, और नागपुर में वो करीब करीब मेरे रिओरिएंटेशन 15 दिन का रिओरिएंटेशन पूरा किया, फिर से बनारस चले गया। उसके बाद जो 3 महीने के लिए आए, वो 3 महीने के लिए वो पूरा पंचकर्मा मुझसे पढ़े। वो हेडविंग करके है, और आज वो हेडविंग जिन्होंने विद्यासागर एकेडमी ऑफ आयुर्वेदा 4.5 साल का कोर्स चला रही है जर्मनी में, लुडविग्सबर्ग स्टुटगार्ट में वो चला रही है वो कोर्स। और उसके लिए एमबीबीएस लोग या कुछ हेल्थ प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं वो लोग अभी वहाँ पे एडमिशन होते हैं, और उन लोगों की इंटर्नशिप मेरे हॉस्पिटल में होती है, जो आयुर्वेद धाम में होती है, समाधान में होती है। तो हम सोच नहीं रहे थे, और उन्होंने हमें बताया कि नहीं, आपको जर्मनी आना ही है। उस समय मेरी एक वीडियो फिल्म निकली थी, कि वीडियो फिल्म में जैसे शास्त्र में बताए वो सारी चीजें मैंने वीडियो फिल्म में तैयार कर रखी थी। और ये वीडियो फिल्म लेके मैं जब जर्मनी पहुंचा हूँ 1 महीने के लिए, तो सारा पूरे जर्मनी में पर्यटन किया हूँ मैडम के साथ में, और हर जगह जो साउथ से बहुत सारे लोग आते, डॉक्टर जीवन था, डॉक्टर शाहिद थे, बहुत सारे लोग थे, डॉक्टर जाबी था, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये वीडियो कैसेट लेके पंचकर्मा की प्रैक्टिस शुरू की थी। कुछ लोग वमन करने लगे थे, कुछ विरेचन करने लगे थे, बस्ती भी बहुत अच्छे से करने लगे थे, क्योंकि मैंने इस तरह से वो वीडियो कैसेट की थी कि वो वीडियो कैसेट देख के उनको पूरी तरह से सूक्ष्म वस्तु मैंने उसमें डाली थी। और उस कारण मैं वो जर्मनी के आसपास पूरे जर्मनी में इस तरह से फैल गया था कि डॉक्टर गौकर यानी पंचकर्मा, इस प्रकार से एक रिलेशन बन गया था। उस समय से मैं अभी तक जर्मनी के जो प्रैक्टिशनर है वो मेरे पास आते सीखने के लिए, वो पेशेंट्स लेके आते। जनरली हमारे यहाँ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में वो पेशेंट्स आयुर्वेदा में एडमिट होते हैं, और अलग अलग वैद्य वहाँ के नेचुरोपैथिस्ट हमारे पास सीखने भी आते हैं। और हम एक फ्रेंचाइजी रूप में वहाँ पे एक क्लिनिक भी निकालते हैं।
तो हम सोच नहीं सकते कि हमारी फ्रेंचाइजी वहाँ पे 5 होगी। एक हैम्बर्ग में है, एक हेडलबर्ग में है, एक स्टुटगार्ट में है, एक आकेन में है। हम सोच नहीं सकते कि आयुर्वेद के जरिए हम फॉरेन पहुंचेंगे, आयुर्वेद के जरिए हम जर्मनी पहुंचेंगे, ये हमने किया। लेकिन सातत्य इसके लिए कारण पड़ा, और इस प्रकार का रिओरिएंटेशन कोर्स मैं करते रहा हूँ। ये जो इंस्ट्रूमेंटाइजेशन का को यही नहीं हुआ है। इंस्ट्रूमेंटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स मैंने अपने खुद के लिए बनाए थे, लेकिन जब लोगों ने देखा तो नागपुर के सारे कॉलेजेस में, तुम्हारे बहुमूलक कॉलेज थे या गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज, श्री आयुर्वेद कॉलेज में, यहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट गए। हालांकि चंडीगढ़, बिहार, उसके बाद हैदराबाद, हर जगह इंस्ट्रूमेंट गिराना, और ना कि यहीं पे हमारा वमन यंत्र जर्मनी के ग्रासी म्यूजियम में अभी भी वमन यंत्र एज ए ट्रेडिशनल चिकित्सा करके वमन यंत्र वहां पे रखा हुआ है। कोई भी यदि विजिट करता है जर्मनी में तो वो वमन यंत्र वहां पे रखा हुआ है, सारा नाम वगैरह सब उसके बारे में लिंक दी हुई है। तो ये जो हमारी नई सोच थी, वो नई सोच हमने इंस्ट्रूमेंट के जरिए आयुर्वेद पंचकर्म को हमने उभारा, और इसके कारण ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हम उसमें कर पाए, रिसर्च कर पाए। तो ये पेशेंट के दृष्टिकोण से और विद्यार्थी के दृष्टिकोण से एक बहुत ही बड़ा कदम रहा। फिर ये करते करते ऐसा हुआ कि समाधान हॉस्पिटल में इतने पेशेंट्स रहे, एडमिशन इतनी ज्यादा रही कि हमें जगह कम पड़ने लगी। एक मेरा सपना, हेलो हेलो सॉरी फॉर कोई बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं कोई? सॉरी फॉर येतो ना घरीच करता येईल मला, सामान घेऊन जाऊ ना वैभव सर हेलो प्लीज घेऊन चाललेला मला। हा हेलो, म्यूट युअर माइक, म्यूट युअर माइक। नाही ही गाडी सर्व्हिसिंग करायची ना आपली। हेलो, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, प्लीज प्रोसीड सर। ओके सर, थैंक यू। तो इस प्रकार से हमारा प्रवास रहा। प्रवास यहीं पे नहीं रुका, प्रवास करते करते स्टूडेंट्स का आना, बाहर लोगों का आना, और एक प्रैक्टिस करते करते हम ऐसे स्पेशलिस्ट, ऐसे व्याधियों पर पहुंचते हैं कि जहाँ पे चिकित्सा नहीं है, आधुनिक में भी चिकित्सा नहीं है, और ऐसे चिकित्सा नहीं है और वो चिकित्सा हम कर दिखाते हैं। ऐसी ही कुछ व्याधियां हैं जो व्याधियों में मैंने अपने ज्यादा से ज्यादा चिकित्सा की है। जैसे स्लिप डिस्क, ऑस्टियोआर्थराइटिस में सिर्फ ऑपरेशन ही बताया जाता था। लोग ऑपरेशन करने की इच्छा न करते हुए या कुछ पैसे के कारण नहीं चिकित्सा कर पाते हैं, वो रुग्ण को हम ठीक कर पाते हैं। ऑपरेशन करने की इच्छा नहीं होती है। तो ऐसे स्पेसिफिक व्याधियां जो अंतिम अवस्था में पहुंच चुके हैं, जैसे पार्किंसन डिसीज जो अंतिम अवस्था में पहुंच चुके हैं, ऐसी व्याधियां जो सर्वाइकल कॉर्ड एडिमा जिसमें दोनों हाथ और दोनों पैर ढीले पड़ जाते हैं, ऐसे रुग्ण जिनको ऑपरेशन के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता, ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आने लगे। और ऐसे पेशेंट जब आने लगे तो एक ऐसा हुआ कि नागपुर तक ही सीमित न रहते हुए ये संपूर्ण भारत से रुग्ण हमारे तरफ आने लगे, ये हमारी थी। और इस कारण मेरा सपना जो था कि आयुर्वेद धाम में इस तरह से बनाऊं, एक ऐसी चिकित्सालय बनाऊं जो निसर्ग के सानिध्य में रहेगा। आज आप देख रहे होंगे कि जो मेरे पीछे आयुर्वेद धाम का जो फोटो दिख रहा है, वो आयुर्वेद धाम पहले इसके आजू बाजू में 150 एकर्स का पूरा पेड़ लगे हुए थे। लेकिन जब मेट्रो सिटी आ गई, नागपुर मेट्रो में चला गया, तो उस पूरे के पूरे वृक्ष कट गए और मैं सिटी में आ गया। नहीं तो वहां पे मैं निसर्ग के सानिध्य पे कुछ अलग ही हॉस्पिटल निकलना चाहता हूँ। मेरा सपना बहुत अलग था। और अभी वो मेट्रो सिटी में आने के कारण अभी मेरा थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया कि मुझे थोड़ा आधुनिक बिल्डिंग, आधुनिक थोड़ा सा ये उसमें इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता पड़ी। तो ये आयुर्वेद धाम मेरा जो शुरू हुआ है, वो आयुर्वेद धाम का जो नींव रखी है वो 2005 में।
2005 से हमने वहाँ पे पेड़ लगाना शुरू कर दिया, बिल्डिंग बांधना शुरू करा, और वो करीब करीब 2010 2011 से वो प्रक्रिया वहाँ पे रुग्ण को रखना ये शुरू हो गया। फिर ये धीरे धीरे करते करते ये इंटरनेशनल हॉस्पिटल हो गया, और इंटरनेशनल हॉस्पिटल स्पेसिफिक जर्मनी के मैं तो और कहीं जा नहीं पाया, और कुछ अमेरिका से जो मेरे संबंधित कुछ लोग थे जो जर्मनी से संबंधित थे, वहीं पर मैं चिकित्सा कर पाया और कहीं नहीं पाया, क्योंकि समय बहुत कम था मुझे पास। तो ये करते करते लोगों की इच्छा ये थी कि और भी कुछ सर आप ऐसा करिए कि हमें प्रैक्टिस करना है। आपने मुझे पंचकर्मा का नॉलेज तो पूरे 15 दिन में दिया है, लेकिन मुझे प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करें जब भी मैं टेबल पे बैठूं, कुर्सी पे बैठूं, तो मैं प्रिस्क्रिप्शन लिखने के काबिल हो जाऊं। जब ये इच्छा स्टूडेंट की मैंने सुनी, तब मेरे ध्यान में आया कि नहीं, हमने और कुछ कोर्स शुरू करना चाहिए। इसलिए मैंने PGCCP कोर्स शुरू किया, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स इन पंचकर्मा। और ये जो कोर्स के लिए जो भी एडमिशन लेता है वो मेरे साथ ही बैठता है करीब 6 महीने, और साथ ही बैठते हुए ये कोर्स पूरा पंचकर्मा, पूरा रसशास्त्र, जो आवश्यक जितने भी फॉर्मुलेशन है वो, और हाउ टू प्रैक्टिस पेशेंट के साथ में डिस्कशन, और वो इस काबिल बने कि वो काबिल बनकर अपना प्रिस्क्रिप्शन, पहले पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन वो लिख पाए। जरूरत पड़े तब वो हमें कॉल करे और हम उनको बोले कि आप थोड़ा सा परिवर्तन करिए, आपकी चिकित्सा सही है, आपकी चिकित्सा थोड़ी सी परिवर्तन करने से ठीक रहेगी। इस प्रकार के स्टूडेंट्स तैयार हो गए, जो प्रैक्टिस के लिए सक्षम हो गए अपने अपने जगह। नागपुर में ही नहीं, पूरे इंडिया में फैल गई। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरे इंडिया में पंचकर्मा डॉक्टर गहुकर नाम लिया जाता है, क्योंकि पूरे इंडिया में फैल गए स्टूडेंट्स। क्योंकि रिओरिएंटेशन अप टू 2010 तक मैं रिओरिएंटेशन कोर्सेस ले रहा था, उसमें कई सारे स्टूडेंट, करीब 2,500 स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाए हुए हैं, और वो हर जगह से आए हुए हैं। ये मैं कृपा ये समझता हूँ कि मेरे गुरु सही में मेरे गुरु रुग्ण और दूसरा एक विद्यार्थी, इन लोगों को मैं अपने गुरु मानता हूँ। साथ में जो मेरे गुरु है जिन्होंने मुझे आयुर्वेद में पढ़ाया है, या उनकी किताब मैंने पढ़ी हुई है, या कई सेमिनार्स पढ़ा हूँ, उसमें से जो कुछ मिला है सारे मेरे गुरु हैं। हर दिन मुझे पढ़ना है, हर दिन मुझे विद्यार्थी बन के रहना है। आज भी मैं भी 4:30 बजे उठ के कुछ करता हूँ आयुर्वेद के लिए, कुछ लिखता हूँ, कुछ नए फॉर्मुलेशन निकालता हूँ। आज भी 4:30 बजे में लिखता हूँ। तो हमेशा विद्यार्थी बन के रहिएगा। यदि विद्यार्थी बन रहे, उसके लिए सिर्फ चाहिए हमें श्रद्धा चाहिए। इसलिए हमें श्रद्धा चाहिए, और श्रद्धा के साथ में सातत्य चाहिए, और सातत्य के साथ में कुछ करने का हुनर चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि ये जब आप आयुर्वेद की चिकित्सा करते समय आपको एलोपैथी बिल्कुल ही नहीं आए, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं तो मेरे स्टूडेंट को पहली बार ये बताता हूँ कि हर व्यक्ति ने 6 महीने का काला विधि एलोपैथी प्रैक्टिस के अंतर समाविष्ट करना चाहिए। हमें पता है वमन कर्म का व्यापद यदि हो, विरेचन कर्म का व्यापद हो, बस्ती कर्म का व्यापद हो, या अन्य पंचकर्मा का व्यापद हो, वो व्यापद तुम हैंडल कर सकते हो, करना चाहिए, तुम्हें करना आना चाहिए, या कम से कम तुम्हें समझना चाहिए कि ये व्यापद है। आप अन्य डॉक्टर्स को बुला के वो व्यापद को आप उसको सही तरीके से करना है। इसलिए मैं हर व्यक्ति को चाहता हूँ कि आप कम से कम आपके पूरे लाइफ के कम से कम 6 महीने आप अंडर प्रैक्टिस रहिएगा। उनके एलोपैथी की जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो देखिए, उनके एंटीबायोटिक्स का, उसके बाद इमरजेंसी ड्रग का स्टडी करिए, जो कि तुम्हारे प्रैक्टिस में काम आना है। काम कहाँ कहाँ आता है? जैसे शिरावेद करना है, आयुर्वेद में रक्तमोक्षण चिकित्सा बताई हुई है, और रक्तमोक्षण में शिरावेद मुख्य चिकित्सा। शिरावेद करते समय उन्होंने शास्त्र के अनुसार उन्होंने अलग अलग जगह शिरावेद करने के लिए कह सकते हैं कि कैरोटिड वेन से शिरावेद करना है, मन्यागत वेन से करना है, हाथ से करना है, पैर से करना है, गुल्फा ऊर्ध्व, गुल्फा अधो, हर जगह से तुम्हें यकृत के लिए हाथ से। तो अलग अलग व्याधि में शिरावेद का स्थान भी अलग अलग है।
जब आज हम देखते हैं कि शिरायुद्ध वहां से करना है, शिरा वहां पे दिखती नहीं है, बहुत मुश्किल से शिरा लगती है, और वहां से शिरा को पकड़कर शिरावेद करना और रक्त को विस्तृत करना, निरारण करना, ये तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा टास्क होता है प्रैक्टिस के बीच में। तो ऐसे समय तुम्हें आईवी किस तरह से लगाना होता है, आईवी की क्या आवश्यकता है, तो ये मॉडर्न में जाके तुम्हें पढ़ना है आईवी। इसकी तुम्हें आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में बहुत ही आवश्यक। वमन कर्म में यदि रुग्ण को ब्लड प्रेशर फॉल हुआ तो हमने डेक्सामेथासोन आप दे सकते हो, एट्रोपिन कब देना है, एड्रेलिन कब देना है, तुम्हें रेंटेक कब देना है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। आईवी लगाते समय तुम्हें आईवी लगा सकते हो कि नहीं, ये भी पता होना चाहिए। आईवी तुरंत आईवी आपको लगा सकते हैं, ऐसी परिस्थिति होना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति आती है वमन कर्म विरेचन में। अतियोग जब होता है तो अतियोग तुम्हें बता के नहीं आता, कभी कभी बता के नहीं आती कि ये रुग्ण में अतियोग होगा। जब तुम डोज निर्णय करते हो तो कभी व्याधि बल कम होता है तो कभी रुग्ण बल कम होता है, और ये अतियोग आ जाता है। लेकिन वो अतियोग शास्त्र में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जिनको वमन विरेचन कर्म आता है ऐसे वैद्य उसी चिकित्सा करे और रुग्ण को पूरी तरह से ठीक करे और उसको व्यापक भी ना हो, ऐसा वैद्य निष्णात वैद्य कहा जाता है। ये तुम्हें श्लोक में मिलेगा, मैंने उसका तुम्हें अर्थ बताया, ये श्लोक में लिखा हुआ है शरक में जो मैंने कहा। तो इसका मतलब तुम्हें यह है कि तुम्हें वमन विरेचन बस्ते आदि सारे कर्म आना चाहिए। मैं कहता हूं कि सारे कर्म आना आवश्यक है, ऐसा नहीं है। मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये तो पंचकर्म के लिए मैंने उसका महत्व और तुम्हारे करने के लिए बहुत कुछ है, इसके लिए मैंने बताया हुआ है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी अभी मैंने देखा है कि बनारस यूनिवर्सिटी हमें डीएम कोर्स दे रहे हैं, आफ्टर एमडी पीएचडी दे रहे हैं 3 वर्ष के लिए, और वो भी ऐसी व्याधि अतिक चिकित्सा इन आयुर्वेदा। एक तुम्हें जैसे एलोपैथी में डीएम डॉक्टर ऑफ मेडिसिन करके एक डिग्री मिलती है, वैसे आयुर्वेद में ऐसे हो रहा है, अतिक चिकित्सा में डिग्री मिल सकती है, बाल रोग में स्पेसिफिक अलग डिग्री मिल सकती है। तो ऐसा अभी आयुर्वेद में हो रहा है। पहले एमडी भी नहीं था हमारे समय, फिर एमडी आया है। अभी एमडी में आने के बाद अभी क्या हुआ है कि अभी तो सुपर स्पेशलिटी आ गई उसी में, और ऐसे सुपर स्पेशलिटी में आपको एंटर करना है। तो आपके पास जगह बहुत है, आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि आयुर्वेद इतना छोटा नहीं है। एलोपैथी जैसे आधुनिक मॉडर्न जैसा एक छोटा कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि हम देखिएगा हर चीज को पैथी कहते हैं। एलोपैथी, मॉडर्न पैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी। कभी आयुर्वेद को पैथी लगा के देखा है आपने? जैसा नाम दिया है आपने पैथी कभी? पैथी मतलब आज एक स्पेसिफिक पार्ट आपने लिया हुआ है, बस, उससे अधिक नहीं, है ना। पैथी मतलब स्पेसिफिक। आज मॉडर्न सर्जन कहता है कि कोका अपना कॉफी से ये फायदे, कैंसर पर इसका अचूक उपाय है, और दूसरी बार एक 15 दिन के बाद उसी के ऊपर ये आता है कि नहीं नहीं, कॉफी उसके ऊपर बिल्कुल नहीं चलेगी, कैंसर बढ़ जाता है। आज एक एंटीबायोटिक ये है, हम जब उस समय सेफ्ट्रान प्रयोग करते थे, आज उसके कितने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, अलग अलग मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। अस्थायी स्वरूप में है ये सारा, और अस्थायी स्वरूप इसका आरंभ होता है और उसका अंत भी है। लेकिन आयुर्वेद शास्त्र का आरंभ और अंत बिल्कुल ही नहीं है। दो के बीच में आप देखोगे तो इसको आरंभ तो है लेकिन अंत कभी दिखा ही नहीं है। कि जब तक तुम 100 साल के जियोगे, 100 साल तक प्रैक्टिस करोगे, 100 साल तक तुम्हें अंत नहीं दिखेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे और भी चरक पढ़ना है, और भी मुझे सुश्रुत पढ़ना है, और भी मुझे हरित संहिता पढ़ना है, बेल संहिता पढ़ना है। मैं तो तुम्हारे आदरणीय वाघे सर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हरित संहिता, बेल संहिता और अन्य संहिता को जो लुप्त हो चुकी थी, वो लुप्त हुई संहिता पर कुछ भाष्य किया है, टीका किए हुए, और वो मार्केट में आए हैं। मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ इस माध्यम से। तो करने के लिए कुछ है, अभी देखिएगा, करने के लिए कुछ भी है, इतना कुछ है।
आप सिर्फ कहते हैं कि बाल रोग तज्ञ होना है, बाल रोग इतना कंसेप्ट तुम्हारे पास आगे पड़ा हुआ है बाल रोगों के लिए कि शायद एलोपैथी से भी अधिक। क्यों? कि हमें जरूरी नहीं, हमें प्रतिबंधात्मक उपाय हमारे पास है, हमें जरूरी नहीं कि आयुर्वेद व्याधि होने के बाद ही चिकित्सा करें। और बाकी पैथी में कैसा है कि व्याधि होने के बाद चिकित्सा करने की है, और ये पैथी में प्रारंभ से ही चिकित्सा करनी है। तो हमें हमें क्या होता है, इससे शास्त्र अगाढ़ हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है। गायनिक में हमने यदि देखा है तो एक कंसेप्ट आप चले कि गर्भिणी परिचर्या, श्रुति का परिचर्या, आप गर्भिणी परिचर्या पर अकेली एक काम कर सकती हो तो आपका पूरा जीवन उसी में चला जाए, इतने पेशेंट मिलोगे आपके। सौंदर्य, ब्यूटी बात, ब्यूटी चिकित्सा, तो ऐसा नहीं कि आपको हर चीज पंचकर्मा ही करना है, उसमें से कुछ पंचकर्मा उस पर लेना है, आप दूसरे से पंचकर्मा लेके आपकी प्रैक्टिस भी करना है। एलोपैथी जैसे क्यों कर सकते हो, आपको जिसमें इंटरेस्ट हो वो इंटरेस्ट आप में, इसमें बहुत ही अलग अलग व्याधियों पे, स्वस्थ रूप पर कर सकते हो, प्रिवेंशन पर कर सकते हो, आघात तंत्र पे कर सकते हो, आघात तंत्र विष तंत्र चिकित्सा भी कर सकते हो, भूत बाधा चिकित्सा, अभी कोरोना चल रहा है, भूत बाधा चिकित्सा भी कर सकते हो, होम हवन इसमें भी कर सकते हो आप पोस्ट डिग्री। आजकल कुछ हमारे गुरु जो है वो गुरु होम हवन के आधार पर, धूपादि आधार पर कुछ गुरु कार्य कर रहे हैं जो कि कोरोना ठीक करने के लिए। तो हर अष्टांग आयुर्वेद में हर कोई आपके सामने पड़े हुए हैं, आपके सामने है, और वो उसमें से एक आपने कंसेप्ट लिया, वो कंसेप्ट लेके आप अपनी पूरी चिकित्सा, पूरा आयुष्य आप उसको डिवोट कर सकते हैं, और आप उसमें आर्थिक और लोगों की सेवा के रूप में आपको उसमें अगणित फायदा आपको उसमें से मिल सकता है। ऐसे करते करते जब स्पेसिफिक प्रैक्टिस करने लगते हैं तो स्पेसिफिक प्रकार के ही रुग्ण तुम्हारी तरफ आते हैं, और एक हमारी आइडेंटिटी बन जाती है कि ये डॉक्टर गौ के पास यदि स्लिप डिस्क है, ये स्लिप डिस्क कोई भी प्रकार की स्लिप डिस्क हो या लिस्टेसिस हो, कोई भी प्रकार की व्याधि हो, ये व्याधि ठीक करेगा। तो ये कुछ सालों के बाद अपनी एक प्रकार की ये हो जाती है। मेरी वमन में मास्टरी है, कि मेरा वमन जो मैंने 95 में पास आउट किया MD इन पंचकर्मा 10 साल के बाद। तो क्रिटिकल स्टडी ऑफ वमन कर्म एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन ब्रेन केमिस्ट्री, तो मेरी वमन में मास्टरी है। जहां भी मुझे बुलाया जाता है वमन तज्ञ करके बुलाया जाता है। तो ऐसा है कि आप में से कोई वमन के लिए हो सकता है, सिर्फ बस्ती के लिए भी आप निष्णात हो सकते हो, या रक्तम ऑक्सीजन के लिए भी निष्णात हो सकते हो, अग्निकर्म के लिए निष्णात हो सकते हो। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ आयुर्वेद के लिए। आयुर्वेद शब्द बहुत फास्ट है, वेद है, आयुर्वेद है, बहुत फास्ट है, जिसका ये मतलब भागवत पुराण, ऐसे अनेक पुराण में, अनेक संहिताओं में इसका आयुर्वेद का, अथर्व में, ऋग्वेद सभी में आयुर्वेद का उल्लेख, चिकित्सा का उल्लेख आया हुआ है। इसका प्रगाढ़, प्रदीर्घ और सारे क्या हमारे पास इन लोगों से, जिन लोगों की पैथी है उनसे अलग क्या है हमारे पास अलग दोष है। एक प्रश्न पूछते हैं बार बार हमें, एक प्रश्न हमें पूछते हैं कि सर ये दोष तो दिखते नहीं है, और आप कहते हैं कि हमारे पास दोष है, बहुमूल्य है, लेकिन हमें तो दोष कभी दिखे नहीं। पहला प्रश्न होता है, और ये प्रश्न आपको भी पड़ता होगा जब आप एंटर करोगे फर्स्ट ईयर में, तब आपको भी ये प्रश्न पड़ा कि सर दोष दिखते नहीं है, लेकिन सारा का सारा दोषी ही कार्य करते हैं, दोषी ही कार्य करते हैं, ये कैसे क्या? और जब ये पढ़ते पढ़ते हमें दोष समझने लगते हैं, कफ क्या है, पित्त क्या है, वात क्या है, ये समझने लगते हैं, तो जब समझने के बाद हमें लगता है कि दुनिया में आधुनिक साइंस में कुछ भी नहीं है, इनके पास सारे के सारे धातु है, रस है, रक्त है, मांस है, मेद है, सब कुछ है, इसका सारा विश्लेषण है, बहुत सारे रिसर्चेस है,
लेकिन व्याधि कैसे होता है यही उन लोगों को पता नहीं है। आप डायबिटिक लोगों के पास चलिए, डायबिटिक आपकी लेवल बढ़ गई है, ग्लाइकोमेट के साथ में और एक ड्रग ऐड होता है, कभी वो पूछता है आपको कि आपने क्या खाया है, आप किस प्रकार से खाना खाते हो, कितने बजे खाना खाते हो, कितने बजे उठते हो, दिन में सोते हो क्या, रात में जगते हो क्या, कभी दिनचर्या पूछिए। सिर्फ एक मेडिसिन बढ़ाने की दी, क्या करते, किसने आयुर्वेद, किसने मुझे बताइए कि डायबिटिक व्यक्ति में से किसने डायबिटिक को आज तक ठीक किया हुआ है? नागपुर, मैं तो जानता हूं कि नागपुर में जितने भी डायबिटोलॉजिस्ट है, मैं जानता हूं कि इनमें से सिर्फ 1% लोगों को ठीक करते हैं, बाकी लोग मृत्यु तक चिकित्सा देते रहे डायबिटिक के साथ में। एक बार इनके पास व्यक्ति जुड़ गया डायबिटिक का, समझ लीजिए कि ये उन्हीं का हो गया। औषधि की मात्रा बढ़ाते 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 डायबिटिक से ही मरता है, उनके कॉम्प्लिकेशन से ही मरता है। क्या चिकित्सा उनके पास, क्या ठीक किया उसने, किया है ठीक? यदि हम अपने पास यदि मधुमेह का रुग्ण आता है तो हम ये पूछते हैं कि बाबा तेरा डेली रूटीन क्या है। डेली रूटीन में यदि उसके हेतु है, कारण है, यदि कारण है दिन में सोना है, तो हमें पता होना चाहिए कि दिन में सोने से कब बढ़ता है, रात में जगने से वात और पित्त बढ़ता है। यदि तीनों दोषों का बैलेंस बिगड़ जाता है तो शरीर का जो मेटाबॉलिज्म वो बिगड़ता है, और ये मेटाबॉलिज्म नहीं बिगड़ जाता है तो डायबिटिक नहीं होगा, थायराइड नहीं होगा, अन्य व्याधियां नहीं होगी, हार्ट डिसीज नहीं होगी, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, सारी व्याधियां होगी। तो हमारे पास वजह है कि हेतु के जो गुण हैं, जैसे आप दिन में सोते हो, जैसे आपने चिप्स खाए हो, यदि आप चिप्स खाते हो तो चिप्स खाने में आप पता चलना चाहिए कि चिप्स बनते हैं बटाटे का, बटाटे ये गुरु है, मधुर रसात्मक है, ये गुरु है, ये पचने के लिए हुई है। तले जाते हैं तेल भी गुरु है, जब चटनी मसाले जाते हैं तो पित्त बढ़ता है, जब कुछ खट्टी चीज जाती हो तो अम्ल और पित्त बढ़ जाता है। तो एक चिप्स खाते हो, कुरकुरे खाते हुए, तो तुम्हारे शरीर में कफ भी बढ़ेगा, पित्त भी विकृत होगा और वात भी विकृत होगा। तीनों दोषों को बढ़ाने वाले चिप्स है, कुरकुरे है ना। यह हम समझ सकते हैं कि ये कुरकुरे चिप्स के कारण इनको अतिसार हुआ है। मुझे बताइए, जब एलोपैथी के साथ जाएंगे लोग और अतिसार डायरिया क्यों हुआ है, वो पूछेंगे आपने कुछ खाया? नहीं पूछेंगे। क्या लोमोपेन की एक गोली दे देंगे और बताएंगे बूच लगा देंगे। उनको ये भी पता नहीं है कि अतिसार में ग्राही चिकित्सा दी जाती है, स्तंभन नहीं। आप ये बात को अभी तक नहीं समझ पाओगे, लेकिन कुछ आपके माइंड में मैं डाल रहा हूं कि ऐसे ऐसे सिद्धांत है आयुर्वेद में कि जो बेसिक से ही ठीक करते हैं, क्योंकि सिद्धांत है, ये सिद्धांत ऐसे है कि चरक सुश्रुति ने हजारों पेशेंट पर परीक्षण कर उनको स्थापित किया है। ऐसे ही नहीं है, या ऐसे ही उन्होंने दृष्टि से देखा और वो सिद्धांतों को दिखा है। आज तक 5000 साल के बाद भी आज ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं निकला है, या ऐसा कोई आयुर्वेद फिजिशियन नहीं निकला जिन्होंने एक मतलब शास्त्र में जो लिखी हुई जो लाइन है, श्लोक है, उस श्लोक में से एक को हटाया और उसको अपना श्लोक ऐड किया। ऐसा तो अभी तक हुआ नहीं। 42 साल से मैं देख रहा हूं, ऐसा कुछ हुआ नहीं कि ये श्लोक को हम गलत साबित करें। इतने सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं ना, आज में भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनमें से कोई टीकाकार भी उसको ना निकाल सके और ना उसमें डाल सके। मतलब इतना शाश्वत साइंस है। इस शाश्वत साइंस के प्रति आपको बहुत अधिक श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा के साथ में सातत्य होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। और ये सातत्य के कारण जब मैं लोगों को पढ़ाते जब लोगों को ऐसा लगा कि गुरु शिष्य परंपरा में मेरा सेंटर योग्य है, इसलिए मुझे राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने मुझे गुरु करके सम्मिलित किया है, जो कि आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय आयुर्वेद की एक डीम यूनिवर्सिटी है। और वो यूनिवर्सिटी में हम 68 गुरु है थ्रू आउट इंडिया, हर स्टेट के गुरु है उसमें आते हैं। और ऐसे 68 गुरु में से हर गुरु के तरफ 3 से लेके 5 स्टूडेंट पढ़ाने के लिए भेजते, और उस स्टूडेंट को उनका स्टाइपेंड मिलता है करीब 40,000। आप सभी को उसका ध्यान इसलिए देना है कि आप कहीं भी गुरु को चॉइस कर सकते पूरे इंडिया में।
तो उस पद पर मैं आज कार्यरत हूँ, और वो मैं 2009 से 2010 जो शुरू हुआ है, अभी तो शुरू है। तो ये सातत्य रखने से, रुग्ण को ठीक करने से, विद्यार्थी को सीखने से और अपनी ही श्रद्धा अपनी इसमें रखने से ये मैं कर पाया हूँ। अभी मेरी एक सोच है, जब हमारे हमें अब 42 साल के बाद इस मुकाम में पहुंचे हुए हैं कि हम एक स्पेसिफिक सोच कर एक स्पेसिफिक व्याधियों पर हम चिकित्सा करते हैं, तो हम ऐसे चाहते हैं कि और भी हमारे इस व्याधि पर और भी कोई चिकित्सा हो जाए। इसलिए हमने पीजीसीसीपी कोर्स और हमारी एक एकेडमी है, एकेडमी के जरिए कुछ रिसर्च वर्क होना चाहिए, उसके लिए भी हम लोगों को प्रोत्साहित करते हुए हम रिसर्च वर्क भी ही कर रहे हैं। जैसे स्लीप डिस्क है, स्लीप डिस्क में हम इस प्रकार से काम कर रहे हैं कि एमआरआई में चेंजेस क्या आता है। सही में जो हम तेल धारा करते हैं, 60 लीटर ऑयल थेरेपी ऑल ओवर बॉडी करते हैं, वो तेल डिस्क में एंट्री करते हैं या नहीं। यदि डिस्क में एंट्री करती है तो स्पाइनल कॉर्ड पर आने वाला प्रेशर हम जो कहते हैं कि वो कम हो जाता है, निकल जाता है और डिस्क अपने आप सुदृढ़ हो जाती है। उसके ऊपर रिसर्च शुरू है, जो साइंटिफिकली रिसर्च शुरू है। तो रिसर्च करने के लिए भी बहुत ही अच्छा योग हमें हमारे आयुर्वेद में है। तो इसी के साथ में मुझे जैसे लगा, मैं जैसे जैसे दुनिया के लोगों की डिमांड बढ़ी, सर आपको पढ़ाना है, हमने पढ़ा दिया। सर आपको सत्संग लेना है, सत्संग लिया। सर आपको इंस्ट्रूमेंट बनाना है, इंस्ट्रूमेंट बना ले। आपको जर्मनी जाना है या बाहर आपको लेक्चर देना है, हमने बाहर दिया। ऐसे कोई मौके तुम लोगों के जीवन में भी आएंगे, तुम लोगों के जीवन में भी आएंगे। और मैं चाहता हूँ मित्रों हो, मैं चाहता हूँ कि आप आयुर्वेद पे अभी आ गए हो, गलती से नहीं है। आज से ऐसा समझना कि बाय चॉइस लिया है आप लोगों ने, और बाय चॉइस आप आयुर्वेद में आए हुए हैं। और निश्चिंत ही मन में थोड़ी भी किंतु परंतु न रखते हुए आयुर्वेद पे श्रद्धा रखो, सातत्य रखो, संस्कृत का बीच बीच में पठन करो, शास्त्र को समझो, और चरक सुश्रुत वाग्भट कैसे पढ़े, और उसमें से जो भी गांभीर्य उसमें जो छुपा हुआ है उसका स्टडी करो। और आजकल जो सेमिनार्स होते हैं, वो सेमिनार के जरिए इतना ज्ञान लोगों को बांट रहे हैं, जिसके कारण आज हर व्यक्ति आयुर्वेद के ज्ञान से तृप्त हो गया है। आज के इस कोरोना काल में मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ कि कोरोना काल में अभी तक हम चिकित्सा कर रहे हैं, बहुत अच्छा चिकित्सा। अभी जो वेंटिलेटर पर ऐसे लोगों को हम मेडिसिन दे रहे हैं, नहीं होना चाहिए उसके लिए भी मैं मेडिसिन दे रहा हूँ। कुछ मैं रसशास्त्र का विद्यार्थी एमडी हूँ, उसके कारण मेरे फॉर्मुलेशन में रसशास्त्र औषधियाँ बहुत अधिक है, और कारागिर उसकी जो इफेक्ट है वो इफेक्ट भी काम इसमें बहुत अधिक आता है। तो ऐसे समय हम ये एक काम कर रहे हैं और उसके ऊपर रिसर्च भी कर रहे हैं, जिससे हमें बहुत ही अधिक लाभ मिल रहा है। मित्रों, मैं आपको चाहता हूं कि आप भी कोई संस्था से जुड़ जाइए, कोरोना योद्धा करके। कोरोना को डरना नहीं है, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है कि कोरोना के लिए जरूरी है मास्क, ये बहुत जरूरी है, और डिस्टेंस मेंटेन करना है आपको। और जो अभी तक जिनके एडवर्टाइज चल रहे हैं वो सारा कुछ आपको पालना है, लेकिन उसके साथ में एक चीज नहीं बता रहे, वो चीज बताना चाहता हूं मैं कि जब भी शरीर के दोष विकृत होते हैं तभी कोरोना तुम्हारे शरीर में स्पर्श करता है। और ये दोष विकृत किससे होते हैं? दोष विकृत होते हैं आहार और विहार से। यदि तुम्हारा आहार यदि गलत है, आप जो खाने के समय में खाना नहीं चाहते हो, आपका समय खाने का 10:30 बजे, आप खाना खाते हो 1:30 बजे, रात को सोने का समय 10, 10:30 बजे, आप सोते हो 1:30 बजे, उठने का समय 6 बजे हो, आप उठते हो 9 बजे, रात का खाने का समय 7:30 बजे, आप खाना खाते हो 11 बजे। ये छोड़ दीजिए, ये मेरा आग्रह है तुम्हें। और मेस का खाना न खाते हुए आप खुद का बनाया हुआ खाना या ऐसे जगह का खाना खाओ जो खाने से दोष न बढ़े। शरीर में दोष कंटिन्यूस परिवर्तित होते हैं,
मैं दोष की बहुत छोटी सी व्याख्या करता हूँ और वो आपको बताता हूँ कि कोरोना एंटर कैसे करता है बॉडी में। शरीर में जब जन्म से लेके मृत्यु तक शरीर में रस रक्त के साथ में संपूर्ण प्राकृत दोष और विकृत दोष कंटिन्यूअस परिभ्रमण करते रहते हैं। जो क्षय वैगुण्य है, स्थान संश्रय होने का कारण क्षय वैगुण्य, और रोड पे जहाँ पे थोड़ी सी भी खरोच आ गई है वहां पे गड्ढा पड़ जाता है और पानी जमा हो जाता है। उस प्रकार में शरीर में हमारे दोष है। यदि तुमने समोसा, ये इडली डोसा खा रहे, तुम्हारे शरीर में कफ की वृद्धि होगी, ये क्षय वैगुण्य हो गया तुम्हारे शरीर में। कोरोना जो वायरस है इसी लोगों को पकड़ रहा है कि जिनके शरीर में दोष विकृत है। दोष विकृत रहना मतलब तुम्हारे शरीर का अग्नि कमजोर रहना, और अग्नि कमजोर होना मतलब प्रतिकार शक्ति कम होना, और प्रतिकार शक्ति जिनमें कम है उसमें एंटर करना। उनको बहुत खुशी होती है कोरोना को कि मैं अपना रिप्रोडक्शन, मैं अपनी सेना जितने ज्यादा बढ़ा सकूं उतना अधिक है, और वो इतनी सेना बढ़ा देते हैं कि तुम्हारे लंग्स को खत्म कर देते हैं और लास्ट में मृत्यु हो जाती है। इसके लिए जरूरी है तुम्हारा खान पान, लाइफस्टाइल नॉर्मल रहे, और दूसरा मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही आवश्यक है इस पीरियड में। मैं सबको बताता हूँ, सब रुग्णों को मैं ये बताता हूँ कि आपको स्वास्थ्य रखना इसलिए आवश्यक है कि हर वस्तु जब भी आप सोचते हो नेगेटिव, पॉजिटिव या जो भी विकृत सोचते हो, तब आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले स्राव आपके हर ग्रंथियों पर काम करते हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म में भी काम करते हैं। जब तुम्हारे मेटाबॉलिज्म में जो प्रोटीन्स मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है और कोरोना उसमें टच करता है, तो तुम्हारे जो स्ट्रामा होता है कुछ सेल्स का, उस स्ट्रॉम ऐसा कुछ वातावरण बन जाता है, ऐसा तूफान आता है तुम्हारे शरीर में जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले स्राव से, वो तूफान के बीच में कोरोना जाके ये कोरोना व्याधि होती है। इसलिए शारीरिक दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से तुम्हें सजगता रखना चाहिए। तुम्हें व्यायाम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, और हर प्रकार में जिनके साथ में कुछ घड़ा हो, कोई व्यक्ति बीमार हो, सजगता से आप पॉजिटिव एनर्जी उनको दीजिएगा, आप पॉजिटिव रहिए और उनकी पॉजिटिव होकर सेवा करिए। इसी के साथ में आज का एक व्याख्यान मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, और पुनः आज के जो संचालिका मैडम जायसवाल जी, हमारे मित्र वैद्य वाघे जी, और मेरी स्टूडेंट जो आगे दिख रही है वैशाली, ये मेरी स्टूडेंट ही है, और कई स्टूडेंट्स शायद हो सकते हैं। तो ये सारे को मैं धन्यवाद देता हूँ, और मेरे मित्र हो आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और सुब्रयास वाघे जी, आपको भी नमस्कार और धन्यवाद देता हूँ कि मुझे कुछ बोलने का मौका दिया है। धन्यवाद सर। मुझे कुछ बोलना है। हाँ बताइएगा सर। मैं डॉक्टर रविराज परदेसी, मैं श्री आयुर्वेद कॉलेज का पास आउट हूँ, पीजी। और मुझे आपको बताने में बड़ी खुशी है कि हमारी बैच में या हमारे बैच के आगे पीछे ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो आपको रोल मॉडल नहीं मानता है। हम लोग आपके न्यूज़पेपर में नहीं सर, हम आपके न्यूज़पेपर के आर्टिकल पढ़ के बड़े हुए हैं है ना। वो नंदनवन में आपके सेंटर में आके हमने मोटिवेशन लिया है बहुत सारा कि एक आयुर्वेद प्रैक्टिशनर क्या क्या अचीव कर सकता है, इसकी जिंदा मिसाल के रूप में हम आपको देखते हैं। So you have been a great source of inspiration for all of us, and thank you for coming today to enlighten these newcomers. अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपके मार्गदर्शन, बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत आभार है। और आप, मुझे उम्मीद है कि आपका जो यशस्वी चिकित्सीय जीवन प्रवास है वो बहुतों के लिए प्रेरणादायी साबित होगा। और जिस प्रकार से आपने अपने आप को आयुर्वेद के क्षेत्र में स्थापित किया है, उससे बहुत से लोग आपके मार्गदर्शन से आगे भी, अभी भी लाभान्वित हो रहे हैं और आगे भी लाभान्वित होते रहेंगे। और आपने जो यश की जो गुरुकिल्ली हमको जो बताई है कि वो श्रद्धा और सातत्य, ये दो बातें ऐसी है जो सबको अपने जीवन में लानी है। और आप तो हमारे लिए हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहे, हम आपको स्रोत है।
हम आपको कब से जानते हैं, स्कूल जब से हम कॉलेज के विद्यार्थी थे तब आपके यहाँ भी हमारे कुछ बैचमेट भी वमन विरेचन सब करने आते थे, और आप तो मेरे संस्थान से ही हमारे सीनियर ही है, इसलिए हमको विशेष प्रिय है और विशेष रिस्पेक्टफुल भी है। तो मैं फिर से आपको मेरे हृदय से बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने अपने अत्यंत व्यस्ततम समय में से समय निकालकर आपके अनुभव से हमें लाभान्वित किया और हमारे विद्यार्थियों के लिए एक मोटिवेशनल जो प्रेरणादायी टॉक दिया, उसके लिए फिर से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you. Because of your self-experience, students' doubts become clear about Ayurveda. My personal experience is I first interact with Dr. Gaukar sir in my childhood. Sir, आपको याद होगा? बिल्कुल। That time there is only equation is Ayurveda is equal to Dr. Gaukar sir. Your valuable words and experience definitely motivate our student. Thank you for your kind arrival for this program and taking out of time from your busy schedule to attend this lecture. Thank you very much, sir. धन्यवाद। I welcome to all to our second session is an opportunity in Germany for Ayurveda and Yoga by Mrs. Helen Toppin, ma'am, from Germany. I am profusely overjoyed to take an opportunity to introduce our guest of the day, Mrs. Helen Toppin, ma'am. Hi, everyone. Welcome, ma'am. Welcome. Can everybody hear me? Everything good with technology? Yes. Yes, ma'am. Awesome. Yes, madam, we can hear you. Perfect. And a warm welcome. Thank you. So please tell me if I speak too fast. I generally speak very fast, and it's not rare that people have no idea what I'm saying. So if that's the case, please let me know. I will. It's better that I speak slower during the presentation than having in a situation at the end when people are like, I missed half of it. So just let me know. It's not a problem. It happens all the time. So I request you to be slow, madam, but so I will do my best. So here are the slides, are my slides. So first I introduce ma'am. Yes. First, give a little bit introduction of the madam. Okay. So my name is Helen. I was born in France, but I live in Germany. Right now I'm in Nagpur, Maharashtra. So I am in the middle of the third wave, and I've been a yoga student for 8 years now, 2013. And I'm very much convinced of natural medicines and alternative medicines, and more recently Ayurvedic medicine. And so it has changed my life in so many ways, and this is something that I try to share. I'm in no way a doctor or a specialist or anything like that. And this presentation is just based on my research and my personal experience in Germany. So feel free to jump in with comments or anything like that. Everything is welcome. Anything else that you want to know? Please go on, madam, on your subject. Okay. So when I read the topic, I was thinking about jumping directly about what the issues are in Germany and what the opportunities exist there. But I realized that I cannot really talk about the opportunities without talking about the current system in Germany and how Ayurveda is kind of being added to that system but doesn't really fit in it. And so the system, are you seeing my screen? Is this working? no, it's it's not visible. Okay, maybe now I'm sharing. So yes, here's the presentation. Let's go on slideshow. Now it's working? Yes. Yeah. Okay. So yes, I wanted to give you a little bit of background about the German system before I jump into the opportunities that exist there. So
this is the structure that I'm going to be following today. So I named the slides like this so that you can follow. I will also be giving you the slides at the end so that you can go back on your own if anything doesn't make sense. So first of all, I want to talk about the demand side, because Ayurveda isn't actually present in clinical settings in most of Western Europe. But it is something that more and more patients are aware of and more patients want. And so there's this fight between what patients want and what the healthcare system can actually deliver. So this is what this first part is going to be about. The second part is going to be about the regulations in Germany. So what does it take to be a practicing doctor in Germany? Is there any other way? How can you be sanctioned if you have a foreign degree, if you've been trained abroad? So this is the second part. And then the third part is what Germans actually think about the system of Ayurveda if you ask them, and how they think about it and what they think it's for. And then we can look at actual practical career opportunities in Ayurveda and yoga. And then we'll look at the main issues that have to be resolved for Ayurveda to make progress in Germany and in Europe. And then here are a couple links. So, yes. So a little bit about what a Westerner thinks about when you compare Ayurvedic as a part of alternative medicine as opposed to an allopathic treatment path. So an allopathic path is more in the idea that you don't really need to do anything with your lifestyle. You can live the way you want, and whenever something goes wrong, we'll fix it. So it's not actually healthcare, even though we call it healthcare, it's more disease care. And in the Ayurvedic system, it's the opposite mindset. It's the idea that we will teach you how to live a certain way so that diseases do not occur in that environment. And if something actually goes wrong after you've lived properly, then we'll treat you, but only then. In terms of allopathic medicine, so allopathic will look at the symptom as the entire problem. So let me just give you a personal example. So my mother had ear pain, very bad ear pain for years. And she went to all the specialists and they looked at her ear, and every single one of them for, I think, about 5 years said, "Dear ma'am, there's nothing wrong with your ears. We cannot help you. Please go home." And then my mom went to a holistic doctor. And the doctor said, he looked at her ear, and in 2 seconds, he said, "Ma'am, there's nothing wrong with your ears, but you have a cavity, and that is messing with the ear canal. And if you get your cavity fixed, you will not have ear problems anymore." And that was after 5 years. And so my mom got her cavity fixed, and she never had ear problems ever again. So this is the way how, when you look at the symptoms, something like ear pain, and if there's nothing wrong actually with your ear, allopathic system will never be able to find that. But in natural medicine, in like alternative medicine, Ayurvedic medicine, will see that because they have a holistic understanding of the body. Thirdly, there is also, so in allopathic medicine, it's the idea that your body has reached its limit. And because of that, we have to bring something to it in order to fix it. So it's not something that really leaves you empowered as a patient, because you don't have anything to do. Somebody has to fix you. But in Ayurveda, the thinking is different. It's the idea that whatever has showed up in your body that is not here naturally is something that you have created. And so whatever you have created can be uncreated. And because you've created it yourself, you also have the power to uncreate it yourself. And so this leaves you much more empowered in terms of treatment as a patient. In fourth, we have the fact that allopathic medicine in its vast majority is using synthetic chemistry. So we've been messing around in the lab for about 100 years.
and we think that we make better substances than what nature has come up with for the past 5,000 years. We don't. we don't have a large enough or good enough understanding of chemistry and body chemistry to be able to predict all of the side effects and all of the effects that the medicine that we're adding to the body will create down the line. And in Ayurveda, they're using the opposite idea. They say, you know, nature has been trying for 5,000 years. I think we'll take that. And so we just need to understand what nature has provided us with. And lastly, so the allopathic system is something that, because they catch it so late, is something that tends to be very expensive, you know, very aggressive path of treatment. It's chemical warfare. And it's very often something that ends up being expensive. Ayurveda, because it's plant-based and it's more of a daily effort kind of thing, is much more on the affordable side. And so, because this is the path, this is the chart that many Westerners are looking at when they look at their own health and the way they are treated, more and more of them are going away from the allopathic system and towards an Ayurvedic system. So to give you a little bit more information on demand, so more and more patients want to be treated with alternative medicine. So Ayurveda is included in that, because Ayurveda is not really the star show in terms of alternative medicine in Europe or in the West. And we'll find out why at the end. But more and more people want to have this alternative holistic treatment because they want to take care of their own health. They know that they are going to live longer than their parents' generation. And because of internet, they feel empowered to research a specific topic, research a disease, and then find out why it's happening and order supplements themselves, because it's easier for them to do and because it's more affordable. So this is a trend that is coming up. But the problem that many patients are facing is that the two systems are fighting each other. And because these two systems are fighting each other, it creates difficult positions for patients. So for examples, in the US, I was looking at a study yesterday, and the study said that most of the people who take alternative medicine supplements would not tell their doctor about it because they would be afraid of their doctor having a negative reaction to it. So these two systems are at war because the allopathic system very much believes in science and believes it knows everything and doesn't think that anything that is not scientifically proven can actually have an effect. And so because many, if not most, of natural medicine is not something that has been scientifically studied. It's just that through 5,000 years of experience, we actually know what works and what doesn't. And this is not something that is actually convincing to the allopathic system. And yes, so patients are in situations when they want a treatment, they maybe found out on the internet or they've talked to a doctor, an alternative medicine doctor, but then when they go into a clinical setting like a hospital, the hospital doesn't want to give it to them, doesn't believe it's accurate. And patients often have no choice but to take that path of treatment on the side without actually telling their doctor. So yes, so this fight between proper healthcare and charlatanism, which is snake oil kind of doctor, so somebody who's giving you something that has no effect and that is solely relying on, you know, placebo, nocebo effects. This fight is as old as allopathic medicine. So this is not something that is going away anytime soon. So yeah, to give you some statistics, so about 70% of Europeans prefer to be treated in Ayurvedic or naturopathic, so alternative medicine kind of way, because they feel more empowered, it's more affordable, and they have less side effect. Overall, people believe that this is a healthier course of treatment, but when they have a serious condition, they don't know how to integrate this alternative medicine with an actual clinical allopathic path. So demand is definitely there.
Yes, so demand is there, but the system is not really designed to handle this demand. 1 second. Yeah, so the system is not designed to handle the demand. And this is how the current system in Germany is designed. So there's two main ways to exercise medicine in Germany. So you can be Arzt, which is the German word for doctor, straightforward. This is the majority of the medical community. So you have to study for 6 years, minimum. You have to study for 6 years at university. And at the end of the 6 years, even though you have a degree, you are still not allowed to practice medicine in Germany. So you have to take this exam, which is called the Staatsexamen, which is, it's a state exam that's the same for all over the country. It's in German. And if you fail that exam, even though you have studied, you will still not be able to practice. And so after you have passed that exam and you have been sanctioned to practice in Germany, you then go into a hospital, a practical setting for up to 6 years, and you specialize. So it can be surgery, it can be GP medicine, internal medicine, anything that you can find in a hospital. Yes, and as I said, so this is only in German. You would need to, so if you're familiar, so A1, A2 is the starter, beginner level, and then B1, B2 is in between, and C1, C2 is the fluent native speaker range. So this is fluent native speaker is the range that you would need to be in to practice medicine in Germany. So this is the doctor part. Now in Germany, there's an additional system, which is actually very old, but comes from the Middle Ages roughly, and then was brought back in the early 1930s. So in that system, you can be a Heilpraktiker, which is German for a licensed alternative medicine practitioner. So if you want to be an alternative medicine practitioner in Germany, you have to study for about 3 years. And you have to learn basic medical knowledge. So very, very basic knowledge, about like anatomy, infections, like things like that. And the idea behind this training is that they give you a basic understanding of the body so that you do no harm. And what they mean by that is that you're probably going to be using courses of treatment which are not scientifically proven. And they don't care if you have no positive benefits on your patients because your course of treatment is not proven. So they don't actually care. The only thing they want you to do is not cause any harm. So this is what it means to be a Heilpraktiker in Germany. So you have to study for 3 years. You have to take an exam, written and spoken, everything in German. And in that exam, they are only testing that you will not kill anybody. And after you have passed that exam, you can practice a wide range of medicine, of alternative medicine. So like aromatherapy, homeopathy, bioenergetics, hypnosis, traditional Chinese medicine. Really, the range is pretty wide about what you can do. So this is 90% of the practicing medical community in Germany. So this is the slide. So this is a little bit more details about what it would take as a foreign doctor in Germany. So my battery is running out, so you can just have a look at the slide while I plug myself in. This is getting a little bit technical. Yep. So the Staatsexamen is what I mentioned in the other slide when you are a normal doctor. And after you have studied for 6 years, you take that exam called the Staatsexamen. And if you pass it, then you will be allowed in a practical setting. If you have actually done your degree abroad,
So if you have a degree, you've been practicing abroad, you have to submit your credentials to the German government and before you come into the country. And this process is called the approbation. And so the German government will look at your credentials, and they will look at your degree, and they will look at the university and things like that. And then they will decide whether or not they agree with your credentials and they are enough to practice in Germany, or whether or not that is not enough for them and you have to start again. So if you actually pass the approbation, so, okay, a little bit of a note. So most Indian degrees, as far as I could tell, are not accepted in Germany. They are not recognized. It can be that if you have a specific university and they have an exchange program or something like that with Germany, that this is not the case, that your degree would actually be accepted, especially now that Germany, especially with Corona, is having more and more shortages of doctors. But as far as I could tell right now, for a normal medical degree in India, you would not be recognized in Germany. So the first point is, if your credentials are actually recognized and you have found a position as a doctor in Germany, then you would have you have an easier way through the visa application process where you can get a blue card. This is just a touch about visas. If your application is rejected, so what you can do is come into the country as a student or as an intern, and then either ask for a short-term authorization to practice, and then study during that period, and then pass the Staatsexamen, and then to be the same way a German doctor would have been, and then you're allowed to practice. So yeah, you come in as a student or as a job seeker, and then you take this 1 to 2 years that it takes to study for that exam, and then pass it. And then if you have it, you are back on the same way a German trained doctor would have been. Yes, and so it is illegal to practice Germany without state sanction. To practice in Germany without state sanctions. So if you're not, if you don't have a Staatsexamen or an approbation or a Heilpraktiker allowance, you are not at all allowed to practice in Germany. And it would have pretty serious consequences if you went against this law. So now I want to talk a little bit about what Ayurveda is in Germany, how people perceive it, both in terms of patients and doctors. So from a patient perspective, the situation is a little bit difficult because Ayurvedic medicine in Europe are classified as health supplements and not as medicinal substances. And because many of these health supplements that come into the EU actually turned out to be dangerous, because either the product that was in it, the product that was sold is not what is actually inside, the concentration is not appropriate, they have a lot of issues with pesticide and all kind of things like that. So the EU actually had a ban on herbal medical products because there was so much counterban. So the products were not at all up to quality, and it was creating a danger for patients inside the EU. So the EU banned many of these products. And because Ayurvedic medicine are not classified as medicine, they completely fell under that ban, and they have heavily suffered. So right now it's very difficult to find Ayurvedic medicine inside of Germany and inside of Europe in general. And even if you wanted to have it shipped overseas, it can be that you have serious trouble at customs because of that law. This is something that is not only specific to India, but I can say that Indian products are not really favored at the European border, because it's not rare that people lie about the content of products, and lying to border authorities in Europe is not at all the way you want to go. I mean, I know that, for example, Indian rice has been banned in the EU, I think, for 10 years because they lied about pesticides amounts. So this kind of thing, Indian products in general are
on the watch list for European regulations. Yes, which makes it very hard to have access to these medicines. And the second one is that in terms of patient perspective, is that because there is very little scientific research on it, it's most likely that people, so somebody went on Google, on the internet, and found some claimed benefits of a treatment, and then is doing it on their own, but because they just found it on the internet and they still want to have a little bit of trust in their doctor, they will only use it as a complement to an actual treatment. They don't believe that Ayurveda and yoga also is an actual serious method of treatment. They believe it's something that you do, to be less stressed, to be well, but it's not something that would actually save you if you had a health issue. Yes. And so in terms of a doctor's perspective, then you have the issue that most Ayurvedic trained doctor, so who, for example, practice in India, because their degree is not recognized in Germany, they don't practice their actual medicine. They might teach it in a specific setting, but they don't practice. And so there's very little practice. Because there's very little practice, there are very little studies, peer-reviewed, published, that then show the way for hospitals and care facilities to actually say, this works, and this is why we're going to add it in our course of treatment. So yeah, nobody's practicing it. There's no research on it. And so these allopathic facilities don't actually see why they would have to do it. And even if they wanted to, how they could do it, because there's so few people who are actually qualified to practice it in a European setting. So this led to really Ayurveda being seen as something, very cool that you get in the spa. It's not at all something, it's not something that you do when something is serious. This is something you do, cute little thing that you do for yourself on the weekend. And yoga is very much seen the same way in Germany. So yoga for Westerners is not really a system of living or a spiritual system. It's really a glorified form of stretching. So it's something that maybe somebody saw at the gym, they saw some pictures on Instagram, they think it looks cool, they think it might maybe help them like really stress or build a healthy muscle structure, something like that. But in terms of the actual use of yoga in healing, in reorganizing the body and the mind and the energetic system, this is something that is I would say almost completely non-existent in Germany. So most of the teachers that you find are people who have completed the basic, 200-hour training somewhere on a fancy island in Bali or something like that, or in Goa, and they don't actually know what they're doing. And they don't know what they're doing in terms of the physical practice, which is causing a lot of injuries to their students in terms of the physical aspect. But they also have no clue about the other 7 limbs of yoga and what it actually means there when it fits into a healthy lifestyle. This is not really something that you go into depth with. So yes, yoga, Ayurveda, most of that is something very cute that you do on vacation, but it's not at all something that you would take seriously if you had a life-threatening condition or anything like that. So if after seeing the systems, you still wanted to go in it and to make a change in it, here are the avenues that you would be looking at. So if you wanted to actually practice medicine, so you would be in the clinical path. So there's only 2 ways, as I mentioned. You would need to be an actual doctor, so with a valid Staatsexamen,
or you would need to be a Heilpraktiker, which is a licensed alternative medicine practitioner. And then once you have that license, you can just train and specialize in Ayurveda and then sell yourself as an Ayurvedic practitioner. Yeah, but you, the best way to be taken seriously in that field is to actually do first degree in allopathic medicine, in Western medicine, and then do a specialization. So for example, a master degree in Ayurveda. This I would say is the best way to be taken seriously in a clinical practice. The second one, where you can have an effect on people without being in a clinical setting, so without being so heavily regulated by the government, is that you could work in a spa or in a wellness center or something like that. So in these settings, you actually don't need any clinical qualifications. You just need to convince the spa to hire you. And depending on your title, they will have higher or lower requirements. So maybe if you're a therapist or something like that, or if you're just like a wellness coach or something like that, then the requirements are lower. But so if you are in a wellness center and you don't have officially recognized medical qualification in Germany, you can be something like a wellness coach. But in the way that you sell your services, you very clearly have to say that this is only for wellness. This is not therapeutic. This is not going to heal you. This is not a medical treatment. You have to be extremely clear on that, because you could be sued. So it has happened that people who were giving alternative medicine treatments, but were not licensed, and then claimed benefits. So somebody who would give reflexology massage. So when they massage your feet, then your hands for the points. They would do something like that. And because it's traditional Chinese medicine and very famous there, they claimed benefits. They claimed healing benefits that would come from the treatment, and their practices were shut down and they were sued. So this is a very clear differentiation in German law, that if you are not accredited to have therapeutic benefits or to exercise in a clinical settings, then it can only be for wellness and like stress reductions and things like that. You cannot actually claim benefits if you are not a clinical practitioner. Another way you can work in Ayurveda is if you engage with institutions like the European Ayurveda Association. There was a couple of them, I put them in the links. So these are organizations which essentially work with governments, work with insurance company, and work with hospitals to convince them that Ayurveda is a legitimate course of treatment. So one of the problems right now in Germany is that if you actually manage to get an Ayurvedic treatment in a hospital, your insurance would not pay for it, because your insurance does not believe that there is actual benefits, like proven benefits linked with the treatment, and therefore they don't want to pay for it. That's also why people use it as a compliment and they don't tell their doctor, because there's no proven benefits in terms of like Western science to it. Nobody believes it's real, and then it will create a whole kind of problems if you try to include it in your treatment. So there's a problem with hospitals, there's a problem with doctors, there's a problem with insurance company. I mean, clearly the system is not designed for it. So if you wanted to make a change in that, in terms of changing regulations, changing perspectives from, businesses, insurance company, hospitals, these kind of things, then you can work for these institutions. You can also teach. So there is a few schools. The biggest one is in Middlesex in the UK. And so the degree they used to teach used to be valid in Germany, but with Brexit, it's become a lot more complicated in terms of degree
transfers. But so there's a couple institutions in Europe which actually teach Ayurvedic seminars of lower or higher quality, depending on the institutions. And so if this is something you wanted to do, you wouldn't actually need to be accredited by the German government. You would just need to be hired by that institution and convince them with your credentials. And the last one is, so many labs, many pharmaceutical companies are starting to see that there are benefits in plant medicines. And they just, because their people have been trained as chemists in allopathic settings, they have no idea how to go about that and have to include that in their medicines. So this is also one path that you could go into drug manufacturing. So you could work for an allopathic lab and just help them improve what they do. Or you could also work in, let's say, a company which is internationally certified and they sell quality Ayurvedic medicines, and then you could help them, decide what's the dosage, what's the way to improve the medicine, where is it sourced, how do we control quality, and all things like that. So these are the four main paths for career in Europe. In terms of yoga, so because yoga is seen as something cute that you do on vacation, maybe you do to relax on the weekends, there is really very little regulations about what it takes to be a yoga teacher. So you can just complete a 200-hour teacher training basically anywhere. And then you can teach in Germany. It's actually more difficult to be hired as a yoga teacher than to qualify as a yoga teacher in terms of doing this training. So credentials can be a little bit higher if you want to be part of certain networks, because they are picky about where you did your training, with whom did you do it with, and all kinds of things like that. But in general, teaching yoga is pretty much an open field in Germany. So this is the part about what would actually need to get done to make Ayurveda a recognized system of alternative medicine in Germany. So the first one that I found is that there is very little recognized, like peer-reviewed scientific style of studies of Ayurveda that make the courses of treatment credible to a Western settings. So the first one is like have science and have a systemic push in terms of, official institutions. I know you have the Ayush ministry in India. This idea that you officially push for it as a country, as a culture also, I would say, that, this is what you do and this is something that is proven. This is something that the Chinese government has been doing for a very long time with traditional Chinese medicine, which is why traditional Chinese medicine is much better established into European regulations. So for example, in the list of preferred practices for a licensed alternative medicine practitioner in Germany, traditional Chinese medicine is listed specifically as a profession in that sublist. The Chinese medicine falls under, is categorized as a medicine, not as a health supplement, which means they were not really subject to the ban which hit Ayurvedic medicine. And all kinds of small regulations like that mean that the traditional Chinese medicine is much better perceived, I would say, in Europe. This is something that is seen as much more proven, much more scientific than Ayurveda. And this is something that really India as a country could really change if they made a coordinated push in that area. Because, for example, when the ban happened and most of the Ayurvedic medicines had to be pulled out, the Indian government didn't really respond to the EU regulators. And so the EU regulators didn't change the law because clearly there was no pushback. So that is one. The second one, you could qualify, as I said, as an allopathic doctor and then specialize in Ayurveda and push for that treatment in your practice. So you could say, because you're trained as a doctor, they will take you seriously. And then you could say, there's a better way of doing this. In Ayurveda, they do it this way.
And then by having better results, then you could pave the way for the studies and then really show by doing that this is something that works. Yeah, the third one is a lot of research, because Westerners don't believe it until it's in a scientific study. So really more research, more publications on the topic is something that would really push for it. And then finally, it's about ensuring the quality of the medicine that is produced, to make sure that, yeah, the EU border control doesn't have a surprise when they open your medicine box. This is something that I think Ayurveda will never really be taken seriously until the medicine is consistently of a higher quality. So, because let's say, if you think about it, like if you had a company sending you paracetamol for fever and you couldn't trace whether this paracetamol is of decent quality or not and is actually going to have a benefit, it doesn't really matter that you have a study that shows the benefit of paracetamol on a fever if then the paracetamol that you're going to give to your patients is actually of a lower quality. You will never be able to replicate the results in the study if you don't actually have a high quality medicine to back it up. So these are roughly the 4 points that I would say, the 4 big points that are required to push Ayurveda as a system in Germany and in Europe. So this is mostly, yeah, this is what I had to say. So hopefully I didn't speak too fast and my slides were pretty clear. So let me know if you have any questions or comments. Tell me. Student, if you have any question, please ask ma'am free. Hello. Hi. Hi, ma'am. It's Nikta Gupta. What I basically want to ask is, if Ayurveda is not seen as a first, I mean, basically, rightly not the first line of treatment, but what is exactly its importance? I did not get it. Like, I'm facing difficulties in expressing myself, but take your time. What is its basic importance? It is just seen as a wellness thing Yes. for improving your health. I mean, like, it is not that it gives you sure treatment for any medicine, for any disease or like that. It is not seen like it. No, so it is seen, you know, in the same way you would find on the internet that you should drink green tea for weight loss. You know, you would just go on the internet and be like, oh, the internet told me this based on this random website. Let me try. Okay. So Madam, like that. are you aware of the Rosenberg European Ayurvedic Association? Yes. In Germany, Bristol, which is offering a 2 years certified course. Actually, Yes. that course is affiliated to Middlesex University, which offers MSc in Ayurveda, Yes. 2 years MSc in Ayurveda course, which is widely recognized all over the European Union, and all the European Union countries, they are affiliated to that university, Ayurvedic courses, I mean. Yes. So I also saw that course. It's actually the only one. The Middlesex University in the UK is the only European university that has an Ayurvedic department. And the problem with that is that with Brexit, it's no longer automatic that your UK credentials would transfer into Europe. So even if you are actually maybe recognized by your institutions and they are ready to hire you, you might not get this approbation from the government to practice. One more point, one of the largest clinical trial of Ayurvedic drugs on rheumatoid arthritis and osteoarthritis was conducted there itself in Germany. In Germany, yes, by that, in Berlin. Yeah. Yes, so this is one of few, I think there's only very few, and if my memory is correct, so this trial was started in 2009, and then, so the Charité Hospital in Berlin, which is the most prestigious hospital in Berlin,
is supervising the thesis for the MSc in Ayurvedic medicine delivered by Middlesex. Yeah, but this is only, I mean, the Rosenberg Institute is only, from what I could find, is the main one in the German-speaking area of Europe, and it's not even accredited in Germany. It had to be accredited in the UK. And there is only one university in the UK who does this. So this is something that, you know, they have been created in 1993, if my memory is correct. So that would make it 30 years, roughly 30 years that they're operating. And there is only one accreditation in the whole of Europe, which with Brexit might no longer be valid. I mean to ask, when they have proved the credentials of Ayurvedic medicine, and they found it very useful, that trial. Yeah, so I'm sure. Why it is not established then in Germany? Because you need more than one trial to be considered. You need these trials to be repeated. You need them to be, you know, because Ayurveda is a science that has to prove itself and it's competing, it's in active competition with an allopathic system. They need a lot of evidence. They need so much evidence they can no longer deny it. And this is really the thing that Ayurveda is bumping against, because they're saying, you know, we've been taking care of an entire continent of people for 5,000 years. We know this works. And a Western doctor is like, good for you. But I'm not taking the risk of treating my patients with it because I don't have enough evidence to back it up. Okay. Thank you very much, Dr. Helen Taupin, madam, for your excellent presentation of this subject and guiding us regarding the scope of Ayurveda and yoga in Germany. And hopefully in coming future, we will be inviting you physically at our institute to know about the things in detail. And that time we will also let you know about the progress of Ayurveda and its scientificness and its uniqueness, so that you can propagate it in Germany also, and make the people and government aware, and so that they make it more acceptable to the society and government in Germany. Thank you. Yes. Thank you. Thank you, ma'am, for such an informative speech. We felt great pleasure to have a bright shining star among us. If I ask one more thing. Hello? Yes. Hello? Digda, please don't disturb now. Ma'am, if I may ask one more thing. Sure, go ahead. Okay. What is your question? Snigdha, if you have in mind, if you have something in mind, please go ahead. My question is that if all the herbal medicines, all the Ayurvedic medicines are banned there, then how will we conduct researches on it and how will we make it grow? So it's not that everything is banned, is that many suppliers were banned because they did not pass the border controls in terms of quality. So there is still Ayurvedic medicine that does pass, it's just the supply is highly restricted. It's not that there is no Ayurvedic drugs at all on the market. Some things I can buy from Amazon. Thank you, ma'am. Sure. Hello, madam. Hello. Yeah. Do we have another question? Do you have any question, Rushank? Thank you. Thank you, ma'am. We felt Awesome. great pleasure to have bright shining star among us on this occasion. You took the value of today's event to greater value by your zealous speech. Thank you once again. We are looking forward to having you again as our guest. Thank you very Awesome. much. Thank you so much. If any questions, you can send me an email and you can have the slides if you want them. So just let me know if you need anything. Anyone Okay. have any questions? Okay, ma'am. No questions. Okay. Bye. Thank you. Thanks a lot. I welcome you all towards our third session on pharmacognosy and Ayurveda by respected Dr. Prakash Itankar, sir. Welcome, sir.
Thank you, ma'am. Am I audible? Yeah. Yes, you are audible, loud and clear. Yeah, thank you. I find immense pleasure in introducing our honorable guest, Dr. Prakash Itankar, sir. Dr. Prakash Itankar, sir, Professor Pharmacognosy, in Head of the Department of Pharmaceutical Science, Rashtrasant Tukdoji Maharaj, Nagpur University. Sir have experience at 26 years and 4 months, in industrial for 6 years, and in teaching for 20 years. Sir had many research project on research pharmacy problem of industry, about 35. Sir, I have guided 85 medical pharma, 72 in MD Ayurveda, 18 PhD student, and 5 students pursuing PhD. Sir, I have many awards like recipient of prestigious Ethnopharmacognosy Outstanding Service Award in 2015 of Society of Ethnopharmacology India. Recipient of Mahatma Phule Lifetime Achievement for Excellence in Social Work. Sir, I have an award of Anandibai Joshi Awards for Services in Health 2015 on 12th October 2015. Recipient of SFE Outstanding Local Chapters Award in 2018. Recipient of Best Teacher Award in 2018 of Rashtrasanta Tukdoji Maharaj, Nagpur University. Sir, developing in the educational strategies, driving a research activity within a perspective of natural product as a specialization, sensitizing, socializing, and reinstatement of a lost glory of the drug of natural origin, as well as the exploring new drug molecule, novel combination, and novel doses of form. May I request sir to share their valuable words and encourage our students. Welcome, sir. Yeah, thank you so much, madam, for your kind introduction. And before I start, I must first acknowledge, appreciate, and give my regards and gratitude to the management of Jupiter Ayurveda College. And it's a great thing that I'm going to address the young team members who have recently entered into the most noble profession of the world. So good morning, all upcoming doctors, Vaidyas in particular. And I'm just now sharing you my presentation. You will have to please confirm whether the presentation is visible at your end. Yes, sir, it is visible. Okay, I am going now full screen, whether it is visible now fully? Yes, sir, fully visible. Okay, am I able to now shift to slides? Are you able to see the change now? Yes, sir. Okay, that's great. Nature. Okay, that's great. So good morning to all of you. And today's lecture is going to be interconnecting you with the modern, scientific groups and the ancient Ayurveda. So when you have joined the Ayurvedic course, definitely you must be having in mind that it is very old, ancient system of medicine. But let me, quickly tell you that it is no more an ancient system of medicine, but it has also become a modern system of medicine by virtue of the advent of the technology and the science that we people are, attaching with the Ayurveda. So I particularly belong to Department of Pharmaceutical Sciences, and my specialty in pharmaceutical sciences is pharmacognosy. Now, this term might be very new to all of you, but this is the term which tells you about the pharmacog and cognosy. It is the study of crude drugs coming from natural origin. So it is a very simple definition which applies to all those things which comes from the nature and can be used as medicine. So coming from nature means, in brief, we can talk about plants, yes, about minerals, yes, about anything that is happening in the nature. Maybe some point of time you may be feeling, distress or, feeling down, and then you have gone to the woods, means you have gone to the jungle and you got the refreshment. So even that kind of a medication which affects your behavioral sciences also enveloped into the subject of pharmacognosy in pharmaceutical sciences. So we are mostly dealing with that component of Ayurveda, which is coming from nature. So all the raw materials that we are going to talk about is coming into
our domain. We are adding value to it by adding the science and the technology to it. And then we are handing over that science to you so that your ancient science, just now we were listening to Madam Dr. Helen, and she was complaining about the lack of evidences, lack of standardization, lack of quality control. And that is true. And this is where our intervention is more important for Ayurvedic practitioners. So I'm moving ahead swiftly into, and just going to take you into the flashback, just like we have a movie and then we go into the past and then we come down to the present and talk about the future. So similarly, I'm going to tell you about harmonious nature and we. So what is our presence? Where do we stand? So this is the whole cosmos. One of the Akashganga that you can look, you can see on the screen, and just one small dot. Just one small dot is the Earth. So that is what our presence of the Earth we must understand. And where do we stand? What is our quantum in the whole cosmos and the whole nature that is available with us. So this is just a dot. We call it as Earth. That is our own abode, wherein so many of us are living. And this is the next thing is interconnecting the loose matters of studies. So we are talking about the physics of this whole cosmos. But there remains one thing which has been very nicely picked up by Ayurveda and the ancient saints. So whenever we call ancient saints, let us consider them as ancient scientists of India, because they have realized that when our presence in the form of a dot in the whole Akashganga is there, then there definitely must be an influence of all the stars, all the planets, all the components of this Akashganga on us, because we are the part of their family. So connecting all that pieces of information which are probably left with us in the form of some ancient scriptures, which still we are not ready to understand, or we are not able to unfold the mysteries which have been written in the scripts of the Ayurvedic text. But this is where we have to connect the dots. So this is a kind of a riddle that is in front of us, and we have to connect the dots to understand the real nature of nature in which we live. We are coming closer now. So we are zooming our jo durbeen hai. I'm just zooming in, and now we have come to our own, the whole Earth we will talk about. So this is the kind of a part of a mega cosmic life force in which our Earth is a fine spot. Now, while I studied the science and while I studied the metaphysical science, so which talks about the philosophical background of our ancient sciences, I got a very good definition about this cosmic life force, to whom we usually call as Chaitanya Shakti. So Chaitanya Shakti is everywhere, and that Chaitanya Shakti is called as cosmic life force. Many of us, we call it as God also. So Chaitanya Shakti means God. So while defining that kind of phenomena, in science, we do not have any specific definition about what God is or what type cosmic life force is or what is nature. That is really a very difficult kind of a proposition. But I got a very good definition from one of the great philosophers, Shri Vaman Rao Pai of Jivan Vidya Mission, who has defined cosmic life force or God as it is a natural, intrinsically automatic, self-regulatory, systematized order endowed with the universal laws of nature. So universal. So it is not only restricted to the laws of nature on Earth itself, but everywhere. And then it is natural. It is intrinsically automatic. So nobody is controlling the speed of Earth or its rotation or the speed of the sun around and so many galaxies. Everything has been managed naturally. It's very automatic process. It is self-regulatory. So every 24 hours, we see that there is a change of day, and nobody is controlling that. So it is a very systematized order and endowed with the universal laws of nature. I found this
definition as amazing and very close to what we usually see in the modern context. So I'm just again zooming in what we have on this Mother Earth. So we can see that, okay, this is what the natural, this is a photo of Amazon forest, and you can see what nature has given us. How rich are we in terms of the plants, the trees, the shrubs, the creepers. And then besides that, we have a diversity in the form of animals, and naturally, humans are also part of this. So how beautifully we were decorated by the nature, and this was all natural. Nobody has created this. No human had created this kind of forest, but we were bestowed with this kind of natural bounties. Now we are coming closer, and the evolution of human being, when we talk about, yes, we started living close with the nature. We started utilizing the resources from the nature. So we were dependent for the food, for the clothes, for our, the residences, so whatever hutments or the houses that we built, it was all the raw material coming from the surrounding nature. So you can see in this picture will again come back, and we will discuss that. We call it as biodiversity. So besides human, we have so many animals living with us in the nature. We have so many different types of plants, and we have all the bounties that is available. But let me ask you one thing, which may be a question for you in the latter end of our talk, and that is, do we have same kind of plants on the plains? Do we have same kind of plants and the biodiversity in the hilly regions? Do we have the same kind of flora and fauna in the near the the oceans? We have found that everywhere there is a difference. So the composition of this kind of natural flora and fauna is different depending on the geographical locations, altitude, and the distances. So we can really understand how rich is the formation of this natural bounty when nature has created it. But later on, because of our advent, we started manufacturing the food by having cutting some of the trees and then creating the land which is meant for cultivation of our food articles initially. But now it means that I'm just connecting the human with the nature since ancient times and fulfilling its needs. So when the studies went on, and how this is important, I'm going to tell you, as a doctor, we have to really see that when it comes to plants, they have some specific goals. So वो भी एक जिंदा सोल है, वो आते हैं और उनका मेन कार्य यही है कि वो reproduce करे, grow करे, and that is the vegetative soul. So all that kind of living things which comes, which reproduce, which grow, and then die. So that is their role on this planet. Then we have the animals. These are a little bit sensitive soul. And we can see that besides reproduction and growth, they have mobility and they have the sensations. So we can see that they can roam around. Plants cannot move from one place to another place, but animals do. And then we, as a human beings, we are a rational soul. So we can really connect ourselves as a separate entity, because besides reproduction, growth, mobility, and sensation, we are also given with a very specific tool, and that is called as mind, and wherein we usually keep on doing chintan, means the thoughts comes to you, and then we give reflections to those thoughts. So this is the difference between the different composites of life on this earth. Now, when it comes to human, we know that we have been given the strength of applying our mind, and therefore we started interacting with each other. We started applying our ideas. We started, bringing out our thoughts, and we started rationally thinking about everything that has been given around us. So we started understanding our nature. And what happened after that is the outcome of Ayurveda. And this outcome says that we are the part of the whole universe. How? So it is said that we are also hoisting, means we are also the host
for all the Pancha Mahabhutas. Now, what are those Pancha Mahabhutas? As we can see in this picture, we have earth. And these are the 5 basic elements, namely earth, water, fire, air, and space. So when we talk about all these 5 components, and these are considered as the universal components, means it is going to be present everywhere. But some of the philosophers have also called these Pancha Mahabhuta as Pancha Mahadevs. So how pertinent is this, we can say recognition as Pancha Mahadevs, is that they are the great gods. The wonderful and divine natural automatic system of God has manifested through the medium of the 5 Pancha Mahadevs. Now the earth is gross in nature. म्हणजे आपण ज्याला मराठीत म्हणतो स्थूल आहे, म्हणजे you can actually see it and you can feel it, and this is the abode of it. So it is gross in nature, while the water principle is more subtle than the earth principle. So we have to just correlate the presence. पृथ्वी स्थूल आहे आणि अवजड आहे, ती मोठी दिसते. त्याच्यापेक्षा हलकं आणि आपण ज्याला म्हणतो की सटल जे आहे, सूक्ष्म जे आहे, ते आहे वॉटर प्रिन्सिपल. सो and more, therefore it is more widely spread. So we know that almost 70% of earth is covered with water. Then comes the light, or we can say the fire. So usually we term it as prakash, and that means the fire principle is more subtle. It is more subtle than water and widespread than the water principle. We can even now look outside and we can see the sun rays are falling all over our globe, and it reaches right up to the surfaces wherever it is possible. So it is more sukshma, more subtle than the water principle, and therefore its presence is more. If we go further, we find that the air principle is more subtle than the light, and therefore it is more widespread. And finally, the space that we look at means the the beyond Akash, we call that as a Brahmanda or the nature, and that space principle is more subtle. It is more sukshma than even the air principle, and therefore these 5 elements are very important, and we also became the part of it. This has been the outcome of our intellect in the Ayurvedic medicine system, and this is our identity of understanding. And then this space is therefore considered as the all-encompassing, and without any one of them, we can just realize without any one of them, existence of humanity is impossible. You minus any one of this and you will find that humans cannot exist without it. So human body is the best creation, it is said. So what is unique about us? The human body is governed by the laws of nature. Ultimately, we are also made by nature. And how unique are we is the human body is again meeting the same definition that we have seen about the cosmic life force. It means that the human body is by nature also automatic, self-regulated, as well as it is a natural systematized order. Thus, we say that God himself has manifested in the form of human body. Nobody is governing us. Nobody is controlling inside out of us. And it is therefore a natural, very automatic and systematized order created by nature. Now this systematized order dwells both internally as well as externally. From the Ayurvedic context, I am telling you, and this is where the beauty of Ayurveda lies. How Ayurveda stands different than the allopathic or the modern sciences of medicals is here. You can just listen to me. This systematized order dwells both internally as well as externally in the human body and is amazing and wonderful. The creation of the human body embodies a harmonious blend of planning and architecture, scale, proportion, simplicity, and accuracy. We can see that everyone has a nose and it has got its own perfect place. Nobody has the nose here or on the back side. So the scale is perfect, the proportion is perfect, simplicity is there, and accuracy is there. This fact can be listed by means of a number of examples.
So before going into the example of how beautiful our body is, I am just going to quote this particular text from Guyton and Hall. And this applies to the systems of medicines. When it comes to modern system of medicine, we usually compartmentalize our body and treat the body compartment wise. So if you are having a pain in the head, then there will be a different medicine. If you have pain in the muscles, then it will be a different medicine. And likewise, we have really compartmentalized. So if it is breast cancer, yes, you have a different treatment. If you have some other kind of a problem, then the treatment will be different. So that philosophy of modern science has been contested by Ayurveda, wherein we usually consider ourselves as a whole, and a holistic system of management is proposed in Ayurveda. Modern pharmacologists, Guyton and Hall, in their book, which you may come across while you study further, he says that indeed the human body is much more than the sum of its parts, and life relies upon this total function, not just on the function of individual body parts in isolation from the others. So this really complements the findings that we have from the Ayurvedic text. And herein, I'm just going to take the examples of how, phenomenal each of our body part is. So we are going to just take one or two examples and we will realize how rich are we and how much rich we have been made by the Almighty himself. So I will just talk about the eye first, and we can really just, correlate yourself with this example. The value of eyes, it is said, is 1,000,000 times more than that of the Kohinoor diamond. So whatever is the most precious thing, that is a Kohinoor, our eyes are more precious than the Kohinoor diamond. Just as diamonds are set in hollow spaces of jewelry, the diamond-like eyes are set in the hollow space made of bones. So how intricate is this to placing this beautiful, diamonds in the hollow space made of bones. Sensitive eyelids have been given, and eyelashes. हमारे जो बाल यहाँ पे दिए हुए हैं, हमारी जो पर्दा जो है वो आता है, फिर से ऊपर जाता है. So how automatic and natural system has been given to us. I'm just explaining that. The eyes are constantly irrigated by water-like substance from the upper areas of the eyes, so that they are always kept clean and in good condition. So this we have to keep on realizing. The architecture, the engineering of the highest standard that God has created. The eye is planned with great skill, simplicity, accuracy, and proportion, so that its protection and proper functioning is ensured. Now the same is true. Have you realized this? So it is said that the importance of eye means, I'll just share you one example of mine, which happened just 15 days back. I had been positive with corona, and I was not realizing what exactly is happening to me, because there was only temperature earlier. But later on, I realized that my smell sensations have gone. And I started, I was isolated in a room. I just took out all the perfumes, the camphor balls, and I tried to, smell and get the, the real, we can say, the flavor of it. But I was not. And then that was a kind of experience given by nature, telling the importance, the utmost importance of nose. See how much important it is. I could immediately go into the, my lab, and I was just assuming that, okay, I am in the laboratory and students are working and they are working on the burners, and there is a gas leak, right? And imagine I am a teacher and I have lost the sensations of any smell. What will happen? So that kind of a thing came into my mind. But with the God's grace, on the 11th day, I got my smell sensations restored. And that time I realized how, precious the nose is for me. So ये जो इंद्रिय हैं, जो हमें इंद्रिय दिए गए हैं,
इनके बारे में हमने हमेशा कृतज्ञता व्यक्त करती रहनी चाहिए. We must keep on thanking all our indriyas and whole body for whatever that we have been given by the nature, and this has been realized wonderfully well by Ayurveda. So this applies well to the many subtle components. So these are all visible components. These are more, हम लोग बोलते हैं कि स्थूल हैं, ये ज्यादा ग्रॉस हैं, मगर बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे बॉडी में ऐसे हैं कि जो बहुत सूक्ष्म हैं, जिसमें हम लोग लीवर हैं, स्टमक है, पैनक्रियाज हैं, all the glands, those are working for us, and therefore next is another component is blood. So when we say automatic, intrinsically automatic and self-regulatory. Now our body is so beautifully made that one of this, another example is blood, which is very beautiful. So it is the most important constituent. Nobody can deny that. The blood is generated in the human body in an amazing and wonderful manner, but with great ease. इसके लिए कोई फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं पड़ी इस शरीर में. For the blood that is created, also it is in the required proportion only. So everybody gets the things manufactured in the body according to their needs. The blood is supplied to the whole body without fail in a very planned manner and with great skill. Now we can realize how beautiful our body is. So with the advent of modern science, we partially understood about the body. So ये जो चित्र हमारे आंखों के आगे में, this has been a picture that has been depicted by studying the modern science and then understanding the physiology and anatomy of our body. But beyond all this lies the internal organs, जो आयुर्वेदा में ही सिर्फ बात की गई है और किसी साइंस में अभी इसके बारे में बात पहुंची भी नहीं है. Like माइंड के बारे में और कहीं पे भी नहीं लिखा गया है. चित्त, उसके बारे में कहीं पे कोई मेंशन नहीं है मॉडर्न साइंसेस में. द इंटेलेक्ट which cannot be fully understood by man so far, even with the most advent of it. Further ahead live extremely subtle forces like, जिसके बारे में नहीं बोला गया है, वो है imagination of human beings. So how much can we imagine? We can go to the any extent in imagination about which there is no science or evidences generated in the modern sciences. Emotions, belief, desire, convictions. Now about this, there is no mention in the modern sciences. And beyond that, the amazing and fascinating forces that lies in the human body are memorizing and forgetfulness. ये दोनों चीजें भी बहुत ही ट्रिकी हैं और जो बहुत ही सहजता से नेचर ने हमें दी है. So the recording of life incidents, you can imagine that whatever experiences that you have, where are those recorded? Can you anywhere say that, okay, everything happens in the brain? Okay, so can you tell me the pocket of brain wherein the memory is stored, and if you dissect it, you can really find whatever recordings that we have. We do not have. So we cannot go that mechanical. And however, when it comes to remembering the things which might have happened 10 years back or 15 years back, once you recall, immediately those memories will resurface. So all that picture, all that video, where it has been stored. So this is all amazing mystery which has been properly taken care of through Ayurvedic principles of management and never by modern systems. And nobody talks about it because they are very, we can say high thoughtful level. So we call it as metaphysics. And with these amazing and fantastic processes, our body is restored with, such an amazing things. And therefore we always should remain thankful to Almighty for giving us such a wonderful, body, and keep on, thanking. So that is from my side. Now that was the understanding from the modern context and the point of view of Ayurveda about our own beings, so human beings. Similarly, with the advent of science and the intellect that we had, people, means the ancient people also, they started understanding, okay, if this is a tree, okay, how this tree can be useful to human being? Okay, then they started applying their minds. They started, classifying their parts. You have studied this in botany, that, okay, they have the roots, they have the stem, leaf, flower, fruit, seeds, like that. So this is all the intellect that was coming, and then people started, scripting it in the book so that the next generation shall take that
particular piece of information as knowledge and wisdom, and then do some further science on it. And then we realized that, okay, how the scientists started working. Then they started looking into the plant cell components. So they understood that one single cell also is a complete life, and these are the plant cell components, which with the further science we can realize, okay, there are certain components in the cell itself which are working as a source of power, a source of energy to it. Some of them are so different functional components have been identified, and they not only understood that the plants can be grown by using the seeds in the fields, but they also went to the level that one single cell can be grown in the medium, the culture medium, which is called as the cell tissue culture, and the plant can be grown in the medium, in the test tubes or in the conical flask, and which can then be taken into the nursery and then can be taken to the fields. So science started unraveling the mystery that is attached with the resources which are surrounding us, and we started understanding, okay, my ancient saints have suggested ashwagandha to be used for having more power and then more we can say vigor and more immunity. So and then we have Azadirachta indica, that is the Kadu Neem, which is a very good antiviral, very good antibacterial, and their uses were there. Definitely, they were used for all these kind of disinfection purposes and whatnot. So similarly, that kind of a knowledge which was coming from ancestral line of information were picked up by the society nicely, and the modern science was connected to it. And then we started understanding, okay, this wonderful big tree harbors, it is a kind of a factory of so many phytomolecules, and these phytomolecules are actually giving us certain mechanism of action. And whenever we consume some kind of, say tulsi patra, if we are eating, so what is being released on our tongue, what is being released into our stomach, so what are those phytoconstituents and how they are showing the effects. So antitussive effects. So हम लोग जैसा बोलते हैं कि किसी को कफ हो गया, अभी भी कोरोना के काल में हम लोग बोलते हैं कि हल्दी, तुलसी, इसका काढ़ा लीजिए. तो whenever we talk about something plant or anything that is crude drug, we are actually targeting all these. So we have, with the advent of science, understood, okay, these are the phytomolecules which are ultimately responsible for giving us the necessary physiological activity. So this is the kind of understanding we went with. Now came the era of metabolic engineering, and here you can see the whole the cycle of how the medicinal plant cell, the individual. As we know that with the deforestation, many medicinal plant species have vanished, and therefore to keep their life still available and the plants available with us, the cell lines have been kept, and cell lines have been metabolically engineered, and high yielding cell lines are cell cultured, and ultimately we are procuring the secondary metabolites from the cell culture itself. There is no need to grow the whole plant. This is what the modern science is talking about. No need to have a complete plant, only the cell culture of that plant, and that particular secondary metabolite or the phytoconstituent will be generated through that, and it can be served as natural medicine. So I'm just taking you how the modern sciences are trying to support Ayurveda or the Ayurvedic raw material, so that your confidence in your own system of medicine should grow. So usually this is the flow of doing the study in pharmacognosy, wherein you can see the crude drug is taken, their active compounds are taken, their targets are fixed, whether they are useful for the cancer, whether they are useful for any inflammatory disorders, where they are good for controlling the lung infections, and like that. And then the potential targets inside our body are finalized, and then we just establish the pathways by which our molecules are going into the body, connecting with the receptors and delivering their effect, so that the patient gets ultimately relief. But this is the very complex system of science which speaks us about one single molecule and so much of catastrophic effects all across our body. So we really are keen to understand the mechanism of action,
how it gives us the better activity, and what are the adverse effects of the same molecule. So this is the kind of a modern science that I'm just showing you before I again take you back into the era where the Ayurveda has made its place. So these are the further end of the the modern sciences, wherein the one single phytomolecule has been taken and then its connect with the virus was studied, and you can see that the virus was decapacitated and it was neutralized by the foreign phytomolecule, and therefore the phytomolecule was found to be useful. This is just a chart of some of the phytoconstituents isolated from few plants, and when they were classified as antibacterial, कौन से plant है, antifungal कौन से है, antiprotozoal कौन से है, anthelmintic कौन से है. So we found that okay, all these phytoconstituents which have been taken out, isolated from many plants, are definitely having good uses, and they have been classified accordingly. Now this is the my laboratory, wherein in the center I sit with my pharmacognosy module, and our focus is to extend the necessary help regarding the quality control and standardization of the raw materials and the plant materials, which is usually used for treatment of various diseases. So here you can find that our mission mode is applied research. So we do not want to restrict our capacities and skills only up to the laboratories of our department. So we extended our services to many other wings of the society. Like in pharmacognosy, we do scientific validation of traditional system of medicine. So beyond Ayurveda, we are working for traditional healers. We are doing the phytochemical studies. We are into pharmacological, and we are giving the clinical support. Basic research and innovative ideas are pampered, and we are working on those. Herbal industry, we are working with for novel drug delivery systems. We are doing standardization and quality control of Ayurveda medicines and are generating the intellectual property and patents. We are working with pharmaceutical industry, food and nutraceutical industry, forest department, Go Vigyan Anusandhan Kendra. Cultivation of medicinal plants means we are also working with the farmers interested in cultivation of medicinal plants, and we are also working for ethnopharmacology or the traditional healers. So let me again bring you back to your own strengths. So World Health Organization had approved certain systems of medicines as a acceptable systems of medicines, and these are called as the traditional systems of medicines all across the world. And among them, we have found that the traditional systems medicines of India are like this. We usually commonly called as the Ayush therapies, and amongst them Ayurveda is at the top. So knowledge of history and basic doctrine principles was specified in all these, and therefore they were given the global acceptance, and the things were accepted by World Health Organization. However, in the riddle at the down of it, you can see there is a pocket that is left. And what we really forgot to include was the tremendous amount of treasure of information and the knowledge that the traditional healers harbor in their different pockets. Because when we talk about the Ayurveda, we are actually having information about only around 2,500 medicinal plants being included in the medicine manufacturing, and nowadays we can see that the industries which are making profit-making products, they are using not more than 200 medicinal plants. So most common 200 medicinal plants are being offered to the community in the form of Ayurvedic medicines. However, if you look into the data that we went through, working with the traditional healers of all across India, and we found that they are using almost 8,000 to 9,000 medicinal plants, because each one of them resides in different pockets of India, and they are using their own local flora and fauna. They are not going by the text of Ayurveda, but they are using their traditional knowledge, and therefore the number of plants they are using is enormous. So you can also just connect yourself with those traditional healers. And you will find that, okay, somebody is giving treatment for jaundice, say like we commonly call it as pilia. The person who is giving the treatment in, say, Hingna,
will be different than the person who is giving treatment in Wardha. So even at a distance of 50 to 80 kilometers, the plants which are being used in the formulation for treatment of common diseases also differs. So, but that knowledge has never been, taken into consideration. And what we really found is that for thousands of years, when the Ayurvedic courses were not there in our country, when BAMS course was not there, who were the people who were taking care of our society and the health? So we found that, okay, these were the people, the traditional healers of India. They were really giving service for thousands of years. And what was good about them was that they are available, they are affordable and acceptable. They usually don't take any fees for offering their services and giving health to the patient and the needy. And they practice in very remote level. I have worked with the traditional healers in Gadchiroli district, and we have found that, oh, wonderful, amazing people. And they are always happy. They are always ready to help others, and they will never charge you anything, exotic, and will never trouble the patient. Rather, their only intention will be कि ये patient जो है ये ठीक हो जाए. उसके लिए वो पूरा उनका ध्यान लगाते हैं. तो हमें इन्हें भी अपने साथ में जोड़ के रखना है. और यही एक फैक्ट है. आज भी हम लोग जो सुनते हैं, ये देखते हैं, वो ये है कि हमें मालूम है कि बहुत बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स आ गए हैं, and we the people who are living in urban areas are usually tempted to go to the big hospitals and the doctors for any small or acute or say chronic ailments. But there is another side of it wherein we found that many chronic ailments which were never been successfully treated by allopathic system of medicines, the people from urban areas, the very rich people, they are now approaching the traditional healers. They are going to our healers and queuing up in front of their hut in the night of 2 o'clock and 3 o'clock. So these are the observations that we had. कि ये flow दोनों तरफ से है और सबको एक ही चिंता है कि मैं मेरी तबीयत कैसे ठीक रखूं. तो अगर मॉडर्न साइंसेस से नहीं होता है तो हम ट्रेडिशनल की तरफ भी जाते हैं, हम ट्रेडिशनल से नहीं होता है तो हम मॉडर्न साइंस की तरफ भी जा रहे हैं. एंड दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ. बट द रियल कंसर्न एज वाज placed before us was by Dr. Helen, who was talking about, what about the safety profile of these drugs? Even about the Ayurvedic drugs, which has got the text book, and we have got the Ayurvedic Pharmacopoeia of India, and everything is there in place, but still we are lacking in terms of the data or the evidences on the clinical side. Where is the data? So when you are proposing certain medicine for any particular disease, where is the safety data? Where is the efficacy data? How can it be used? What are the standard operating procedures for all these medicines? We are really seriously lacking, and there is no concerted effort so far. And this is where I'm going to put light upon. So the quality, yes, it definitely varies greatly. There are poor evaluation results because we do not have these strong clinical protocols as we have for the allopathic molecules. Then our dosage forms are also different, for which really we independently, we Indian scientists have to derive our own testing protocols for our own types of medicines. Nobody from foreign will come and help you because there is so much of uniqueness in the dosage forms and the combination of medicines. I'm just taking you towards the elite side of the natural contribution. These are the most novel anti-cancer agents which were derived from the plants like Catharanthus roseus, means हमारी जो सदाफुली है, सादा सदाफुली Catharanthus roseus, उसमें से निकाला हुआ vincristine या alkaloid dimer है, and this is found to be wonderfully working good for blood cancer patients. Sorry. Another is the tree that is called as Taxus brevifolia. Again, anti-cancer product paclitaxel has been derived from this plant. Now, why I'm giving you these examples is because every time an allopathic system comes up with a molecule, mind it that it has got a link with the nature. So the lead has been given by nature, and then mind of the human beings, the scientists, have added the technology to it, and then they have come out with the product. So what is available to us in the market is vincristine and its salts. Vincristine sulfate is there, phosphate is there, like that. Similarly, paclitaxel,
it is offered in bottle. So the end user will never be able to acknowledge and appreciate that it has been derived from nature. So every molecule that comes to us is the lead of which has been given by nature. So how important it is always there to appreciate the nature. I am just putting up this another example, and this is the plant called as Artemisia annua. This had a very good mention in the Chinese Materia Medica, and we have seen that Professor Yu Tu from China, she was given the Nobel Laureate of Medicine in 2015 because she worked on that ancient science and the literature that was available with the ancient Materia Medica of China. She worked for almost 30 years and she could come out with a molecule called as artemisinin, which was found to be wonderfully working well against the Plasmodium affected malaria patients. And so many. So we can loudly say that, okay, artemisinin, yes, it was derived from nature, vinca, etoposide, quinine, taxol. So, and in future also, what we expect is the things will come only from nature, and we will have the solution for each and every disease and problems only from the nature. So we are working with the nutritional scientists to source the plants as source of food and medicines. Anna hi Purna Brahma. इस वाक्य का मतलब क्या है, हमारे एंशिएंट साइंसेस में ऐसा मेंशन क्यों किया गया है, इसको अनरावल करना भी जरूरी है. तो हमने इस तरह से काम करना शुरू किया. ये मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ. वी हैव बीन वर्किंग विद the nutritional scientist, and you can see that we went deep into the Tadas and the Adivasis, and we tried to understand what are their food habits. So what are their food habits means probably our ancestors also were having the same food habits, and the vegetables and the natural fruits which our forefathers have eaten, probably we are not eating that because those are not available in the market. Whatever is available in the market, we are just using those. And these are the wonderful the goodies of we can say medicines which were available in the form of food in our region. And this was the study, and this was one of the wonderful competition that we had by involving the ASHA workers of one particular block of Bhivapur district, and the whole the goal was to identify which are the medicines which were used by the nani, nana and dadi dadis. So the information was taken from जो सबसे बुजुर्ग है गांवों में उनसे, और कौन से वनस्पतियां वो लोग यूज करते थे सब्जी भाजी के तौर पे, इसके बारे में एक आशा वर्कर्स के माध्यम से हुआ था. एंड वी वर अमेज्ड in the month of December. This was the contest which was held on 31st December 2019, and this was held in Umred, and we found that they have picked almost 35 vegetables from the surrounding nature based on the information from Dada Nani, and they have prepared the dishes which used to be prepared in our households. Now we have forgotten that. Now we have lost that treasure, and therefore the health has always been filled, the compromised, and therefore we are feeling the problems of immunity and all others. All the things that starts with the proper raw material, and this is an example which was conducted with the support of an industry called as Organic India, who are into business of the organic tea. And here we had taken a few plants which were known anti-diabetic drugs, and what happens when we source it from the organically cultivated place and non-organically cultivated. So you can now understand that organically cultivated means जिसमें पंचगव्य का उपयोग किया गया है, उसके लालन पालन पोषण में, सो फर्टिलाइजर्स जो हैं, उसके जो पेस्टिसाइड्स है, ये सारे नैसर्गिक है. और दूसरा जो साइड है जो नॉन ऑर्गेनिक वाला है, वो पूरा जैसे हम लोग खाद डालते हैं, यूरिया डालते हैं, तो इसी तरह से आजकल हमारे रॉ मटेरियल्स भी कल्टिवेट हो रहे हैं, जो आप लोग शायद आने वाले दिनों में यूज करेंगे. तो हम लोगों ने ऐसा स्टडी करके देखा, और ये पेड़ जो है इसमें से सिर्फ विशेष तौर पे मैं तुलसी के बारे में आपको बताऊंगा कि देखिए ये किस तरह से स्टडी हुई थी. ये OAS यानी ऑर्गेनिकली कल्टिवेटेड तुलसी है, और एक ही दिन में इनका प्लांटेशन हुआ, और एक ही दिन में प्लांटेशन होने के बाद में इसका ऑब्जर्वेशन किया गया. और आप देखेंगे कि 70 डे में आप देखेंगे कि ऑर्गेनिकली ग्रोन तुलसी जो है वो बहुत अच्छे से फ्लरिश हुई है, और ये वाली उतनी नहीं हुई है. मगर हमने देखा कि जो टोटल वजन होता है, जो बॉडी मास होता है उसका, ये जो केमिकल फर्टिलाइजर वाला है उसमें वो हेवीनेस बहुत था, ग्रोथ कम थी मगर हेवीनेस बहुत था. जब हमने तोड़ के लाए तो ये एक ही दिन में मुरझा गया,
यानी मृतवत हो गया। मगर जो ऑर्गेनिकली कल्टिवेटेड था, जो उसमें खाद जो है वो गोबर का डाला हुआ था, अपने बायोलॉजिकल मास डाइजेस्ट करके डाला हुआ था, बायोमास था, तो उसमें मगर 3 दिन तक भी वो तोड़ने के बाद में भी जो वनस्पति है वो जिंदा थी, ऐसा हमने तो उसमें, यानी ये बहुत ही प्राइमरी ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद में ये इस तरह से हम लोग वाउचर स्पेसिमेंस बनाते हैं, बॉटनिकली उनको ऑथेंटिकेट करते हैं, यानी मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज होती है, ये माइक्रोस्कोपिक स्टडीज है। कितना ब्यूटीफुल प्लेसमेंट्स होता है सेल्स का, अलग अलग टिश्यूज का। जिस तरह से हमारे बॉडी में मैंने बताया कि 1-2 ही चीजें मैंने आपको बताई कि नैसर्गिक दृष्टि से अगर हम लोग देखे जाए तो एक मैजिकल, अमेजिंग जैसा बोलते हैं, इस तरह का कॉम्बिनेशन हमारे शरीर में जैसा है, वैसे ही पेड़ों में भी है। आप देखेंगे कि ये किस तरह से माइक्रोस्कोपी दिखती है। यू कैन सी द डिफरेंट कंपोनेंट्स। आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ इट, बट let me tell you that this is the area of science in which we are working, which is going to support you, which is going to increase your confidence even in your medicinal plants that are using, because we authenticate it. So these are the transverse section of Ocimum sanctum, and this is how we make use of the tools of modern sciences. यानी जैसे हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं तो आप देखेंगे मैसेरेशन इज अ कॉमन, अनदर इज द सॉक्सिलेट apparatus। ये थोड़ा सा पार्शियल टेम्परेचर के साथ में रिसाइकलिंग ऑफ द सॉल्वेंट्स होता है, और ये जो क्रूड ड्रग है इसका हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं। उसके बाद में उसका हम लोग इसी तरह से यानी शेकिंग के साथ में उसका एक्सट्रैक्शन बढ़ाते हैं, और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और सुपरक्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन है, और इस तरह का एक्सट्रैक्ट हमें बाद में मिलता है। अगर हम लोग उसको फर्दर आइसोलेट करना चाहें, अगर आप देखेंगे कि एक एक्सट्रैक्ट है और उसमें 200 इंग्रेडिएंट्स मगर मेरा रिसर्च करते वक्त काम ये है कि ये 200 में से कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिसके वजह से इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है। तो मुझे एक तो वो बाकी के जो है उनको अलग हटाना पड़ता है, या फिर वो जो इंपॉर्टेंट है उसी को अकेले को अलग निकालना होता है। तो उसे बोलते हैं हम लोग आइसोलेशन टेक्निक्स, और उसके लिए हम लोग ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी देखते हैं। आप देखेंगे कि ये एक्सट्रैक्ट ऊपर में डाला था और उसके अलग अलग अभी जो कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, जिसकी स्टडी होती है। फ्लैश क्रोमेटोग्राफी ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जिसमें सिर्फ आपको एक्सट्रैक्ट एक बार लोड कर देना होता है, और ये कंप्यूटराइज सिस्टम से वो आइसोलेट होता है, और कौन से टेस्ट ट्यूब में कौन सा कंपोनेंट आया है ये हमें पता चलता है। उसके बाद में हम लोग कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स किसी एक्सट्रैक्ट में है ये देखने के लिए ये हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम जो हमारे लैब में भी अवेलेबल है उसको हम लोग यूज करते हैं। ये सारे टूल्स हैं स्टैंडर्डाइजेशन के। फिर हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। जो कंपाउंड आइसोलेट हो गया उसका एग्जैक्टली स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, ये इसका अभ्यास जो है ये फूरियर ट्रांसफर, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, NMR है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, और इंडक्टिव कपल प्लाज्मा एनालिसिस के माध्यम से हम लोग करते हैं। ये एक पिक्चर है, आप देखेंगे कि ये यहाँ पे अगर मैं एक ही डायग्राम को एक्सप्लेन करता हूँ तो ये यहाँ पे हमने वो एक्सट्रैक्ट का स्पॉट डाला था और उसको सॉल्वेंट के माध्यम से इस तरह से चलाया था। तो डिस्ट्रीब्यूट होते 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 इसके अंदर के कंपोनेंट जो है हमें ये सेपरेट होते हुए दिखे। अभी इसमें से हमें जो चाहिए था वो कंपोनेंट है ये वाला ओरिजिनल। तो ये ओरिजिनल कंपोनेंट कौन से सैंपल में है, सिर्फ D सैंपल में है। तो इसी तरह से हम लोग जो है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट के आधार के ऊपर में सही में क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो अच्छा है या नहीं है ये जांच करके दे सकते हैं। तो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ इट, पर ये आपको बिल्कुल दिखेगा चित्र से ही और समझ में आएगा। ये HPTLC है एंड यू कैन सी दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट, ये पूरा उसका एरिया अंडर द कर्व है, इट क्वांटिफाइज द कॉन्स्टिट्यूएंट। तो अगर तुलसी में हम लोगों ने ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट लिया था उर्सोलिक एसिड, एंड यू कैन सी दैट इसका कॉन्सेंट्रेशन है कौन से इसमें कितना है। तो ऑर्गेनिक वाले में हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ गुड एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो है ये ज्यादा मिला था एज कम्पेयर टू द नॉन ऑर्गेनिकली कल्टिवेटेड। तो हमें ये स्टडी से दो चीजें आपको बताना था कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल, ये एक है, और तरीका भी बताया और एग्जांपल भी आपको दिखाया। यूजेनॉल ये उसमें का ऐसा मॉलिक्यूल है जो वोलेटाइल है, यानी जो एक टेम्परेचर के ऊपर में उड़ता है। ये यूजेनॉल का प्रेजेंस जो है तुलसी के स्टैंडर्डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये स्टैंडर्ड है, ये हमारा सैंपल था। तो इसमें यूजेनॉल के साथ में मैच होने वाली ये जो पीक है इसको हम देख के ये पता लगाते हैं कि उसका कॉन्सेंट्रेशन सही में कितना है। उसके बाद में हम देखते हैं कि ओके ये पर्टिकुलर ड्रग जो है इसका एंटी डायबिटिक एक्टिविटी प्रूवन है, मगर साइंस के माध्यम से अभी हमें प्रूव करना है, तो एविडेंस जनरेट करना होगा, तो हमें एनिमल स्टडीज करनी होती है। यू कैन सी
This is the chart which was generated out of the preclinical studies. तो आप लोग डॉक्टर्स के तौर पे पेशेंट्स में क्लिनिकल स्टडीज करते हो, उसके पहले जो डेटा होता है जिसको हम लोग टॉक्सिसिटी प्रोफाइलिंग बोलते हैं और एफिकेसी प्रोफाइलिंग बोलते हैं, मगर किसमें? एनिमल्स में। तो एनिमल में हमने जो स्टडीज किया वो उसको इन विवो प्री क्लिनिकल स्टडीज ऐसा बोलते हैं। तो इसमें हमने एंटी डायबिटिक स्टडीज जब देखा तो पहले रैट्स को डायबिटिक किया और उसके डायबिटिक रैट के अंदर में फिर हमने हमारे इन क्लाइंट्स के स्टडीज की और देखी, और हम लोगों ने देखा कि ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो ये एक एविडेंस हो गया। उसके बाद में वी आर वर्किंग विद दी मेडिसिनल प्लांट ग्रोअर्स, क्योंकि कल्टीवेशन में अगर हम लोग ये नहीं बताएंगे उनको कि किस तरह से उसको कल्टीवेट करना है, क्योंकि ये प्रैक्टिस हमारे पास में पहले नहीं थी। सारा जो रॉ मटेरियल आता था ये पहले सिर्फ और सिर्फ जंगल से आता था, यानी नेचुरल उनका जो एनवायरनमेंट था उसी में से वो सोर्सिंग होता था। मगर अभी ऐसा नहीं होता है। बिकॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एक्ट नाउ इट इज अ क्राइम टू कलेक्ट द रॉ मटेरियल ऑफ मेडिसिन्स फ्रॉम फॉरेस्ट, एंड you can see that after 2010 cultivation of medicinal plant has started, and therefore how it has to be made. अगर वो नॉन ऑर्गेनिकली करते हैं तो उसमें तो धोखा है, यानी अच्छे गुणों के साथ साथ में उसमें नॉन न्यूट्रिशनल फैक्टर्स भी बहुत सारे आते हैं। आने वाले दिनों में ये तो मेरा एक, मैं बता रहा हूँ आपको, फील्ड एक्सपीरियंस एंड डेमोन्स्ट्रेशन एज टीचिंग टूल। मैंने जो मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे मास्टर ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट्स, मेरे PhD के स्टूडेंट्स जो है उनको लेके डायरेक्टली फील्ड में जाना, फील्ड में एक्सप्लोर करना, इंडस्ट्री में जाना, इंडस्ट्री में काढ़ा कैसे बनाते हैं, तेल कैसे बनाते हैं, घृत कैसे बनाते हैं, इसको खुद उसका पार्ट होके समझना और फिर बाद में अपना साइंस उसमें ऐड करना, उसको कंसोलिडेट करना, उसको एविडेंस के साथ में जोड़ना और उनको सर्टिफाई करने के बाद में उन्हें मार्केट में बेचना। इतनी मदद जो है हम लोग एज अ फार्माकोग्नोसिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे कि ये इंडस्ट्रियल विजिट्स है मेरे स्टूडेंट्स की, एंड बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में हम लोग उन्हें लेके जाते हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज हैं वही आपको अभी बता सकती हैं कि किस तरह से यूनिवर्सली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है। जनरली पहले ऐसा होता था कि वैद्य जो है वो एक अपने पेशेंट के लिए अपने स्वयं के हाथों से जड़ी बूटी कलेक्ट करके लाएगा, वो अपने माध्यम से उसको प्रॉपरली ड्राई करेगा, उससे औषधि बनाएगा और वो अकेले पेशेंट को देगा। इतना पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये आयुर्वेदा था, मगर अभी ऐसा नहीं है। वी कैन सी दैट सो मेनी आयुर्वेदिक शॉप्स आर देयर, सो मेनी ब्रांड्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स आर देयर, and some of them are old, some of them are new. Many new companies have come up with their new combinations and like that. So you as a doctor also need to connect with the industries and understand how the medicines are being manufactured in the future. Not only we do the science in the laboratories, but we also disseminate. Because unless we give back the knowledge that has been generated in our laboratory to the stakeholders, like here we worked for the medicinal plant entity, that is the forest, and the buffer forest which was used for cultivation of medicinal plants. So giving them technology, giving them knowledge was one of the part. Organizing very big conferences. You can see that this was the second international conference of ethnopharmacology, wherein galaxy of scientists from all across the world. So 22 nations में से scientists आए थे, and they were here for 3 days in Nagpur. And you can see here one of the very special program was on organizing the Panchakarma, wherein Dr. Raut sir from Government Ayurvedic College was our, the main coordinator and guide for explaining the science behind the Panchakarma in the management of health. So our whole effort is focused on this theme that is called as globalization of local knowledge. हमारा knowledge जो है वो ग्लोब में जाना चाहिए, सबको इसका फायदा होना चाहिए, एंड लोकलाइजिंग ग्लोबल टेक्नोलॉजीज, और बाहर में जो भी इसके रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज है उसे हम लोग आत्मसात करें, उसे हम लोग इनकॉर्पोरेट करें, उसको हम लोग लोकलाइज करें और हमारे लोगों को और पूरे विश्व को इसके माध्यम से हम लोग बेनिफिट्स पहुंचाएं। तो बच्चों के लिए कॉन्फ्रेंस में या जो भी होता है, जिस तरह से यानी दे कैन डू present their research work, they can present their the products, and many such kind of the business meetings also happen in that. This is something which was very interesting for me. So wherein usually we the youngsters follow the advertisements, and what our heroes or heroines are talking to us or telling us, we usually believe that. And this was the experience which was shared by none other than Akshay Kumar, who says that अंग्रेज यहाँ आकर आयुर्वेदिक इलाज कराते हैं और हम तो क्या हमारे पैथी के ऊपर में विश्वास है?
सबसे पहले जब आपने अभी ये फर्स्ट ईयर में एडमिशन दिए हैं, आप लोगों ने बहुत प्राइड फील करना चाहिए कि आप ऐसे साइंस के साथ में काम करने वाले हैं जो बहुत ही एंशिएंट है, बहुत ही एनरिचिंग है, बहुत ही हाई विजडम लेवल का है, जो जिसकी हम लोग बोलते हैं ना एक अंडरस्टैंडिंग जो है, फिलोसॉफी जो है, उसको टच भी नहीं कर पाए हैं अभी तक। बहुत ही नेसेंट स्टेज में है मॉडर्न साइंस, बहुत ही हम लोग बोलेंगे ट्रायल एंड एरर फेज में है। मगर आयुर्वेदा जो है ये परिपक्व है, ये शास्त्र है, ये इटर्नल है और ये रहेगा। तो आप लोग उस एंशिएंट साइंस के साथ में जुड़ गए हो। आपने सिर्फ अभी ये जो मॉडर्न जो भी टेक्नोलॉजीज हैं, एफर्ट्स हैं, ये उसके साथ में जोड़ के एक्सेप्टेबल बनाइए, उसको मैक्सिमम एक्सेप्टेबल बनाइए फॉर द मासेस, सो दैट नॉट ओनली आवर ओन इंडियन पीपल बट ऑल्सो the whole world should acknowledge it and try to envelop it for the betterment of humanity. Again, I am coming back to the same slide which I showed to you, biodiversity. So it means that for a person to remain on this earth, the help that has come was from his surroundings. Similarly, in today's context also, when corona is there, can we not see what is around us? Can our nature help us in this particular context? So yes, in Ayurveda we found that there is a mention about this kind of diseases which were of virulous nature. So it is called as Janapadadvansha and Sansargaj Vyadhiyo ke karan, Aupsargik Rog, Vyadhi Sansarga, and then they have also given us the remedies which also involve isolation, sterilization, sanitization, everything has been there. So while looking into the surrounding, I have found that many scientists have done work about the antiviral immune promoter activities of those very common medicinal plants which are available around us. Maybe ये आपके घर के आंगन में है, पीछे में है या आपकी बस्ती में है और हमें इसकी जानकारी नहीं होने की वजह से हम लोग इसका उपयोग नहीं करते। तो आप देखेंगे ये बहुत सारे पेड़ हैं जिसके डिटेल में अभी मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज ऑफ दी टाइम कंस्ट्रेंट्स, बट दीज आर वेरी कॉमन। बेल है, पारिजातक, गुड़बेल, सीताफल, आप हमारा पेरू का पेड़ है, तुलसी है, अदरक है, ब्लैक पेपर इज देयर, गौती चाह, नींबू का क्रश, हल्दी इज देयर, एंड देन ट्राइडक्स प्रोकम्बेंस जो है ये है। ये इनके ऊपर में अगर आप रिसर्च पेपर्स देखेंगे तो बहुत अच्छे से पब्लिश हुए हैं वे बैक इन 2010, वे बैक इन 2003 जब सार्स का पहला इन्फेक्शन आया था। उसके बाद में इन सभी पेड़ों के ऊपर में ऑलरेडी ऑल ओवर वर्ल्ड में काम किया गया है एंड पीपल, बट ये हमारे आजू बाजू में हमारे निसर्ग में है, निसर्ग ने हमें ये सब दिया हुआ है, हम लोग रियलाइज नहीं करते और इसका उपयोग प्रॉपरली नहीं कर पा रहे। ठीक है ना, ये आपके किचन के गुडीज हैं एंड दिस इज ओनली रियली गोइंग टू गिव अस द नेसेसरी स्ट्रेंथ। नाउ व्हाट आई मीन टू से इज दैट you are now a modern Ayurveda practitioners, so you should be very proud of that. Okay, I am in the era wherein lot of technology is available, lot of scientific tools are available, lot of scientific people are available, and with whom if I work I can really standardize the Ayurvedic practices and the products, and then probably people will accept all across the world. So right now the position is that they are laughing at you. So the quote is that they laugh at me because I am different. And yes, the people who are really boasting upon the naturals, they are different because they still believe that whatever had been there, studied for so many thousands of years, cannot be merely we can say ये बहुत ही हम लोग frivolous है, ऐसा बोल ही नहीं सकते। So if I believe that I am different, I laugh at them because they are all the same. वो सारे एक ही विचारों के बारे में सोचते हैं और हम लोग के पास में इतना प्रगल्भ विचार है जो आयुर्वेदा शरीर के हर एक अंगों को ध्यान से देखता है। तो वर्शिपिंग, जैसा हमने बोला कि ये ह्यूमन बॉडी जो है हमारा गॉड है और इसको कैसे ठीक रखना है, बाय कीपिंग द बॉडी क्लीन, टेकिंग गुड केयर ऑफ इट, नरिश इट विद गुड फूड, ड्रिंक, कल्चरिंग इट विद द संस्कार्स एंड डूइंग योगासना, प्राणायामास। यू हैव टू डू दैट एंड हमें ये पक्का बिलीफ रखना चाहिए कि ये सारा चीज जो है हमारे दुख सुख जो है ये तभी है जब हमारी बॉडी है, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सब खत्म। एंड देयरफॉर you being doctors always should focus upon your patients as this. So you are going to do holistic
and holistic treatment, wherein body, emotions, mind, relationship, spirit, everything will be taken into consideration while giving the treatment. And this is the beauty of Ayurveda. So let us visualize that all your patients would be, going laughing like this, and you will be, achieving the eternal, we can say, happiness during the practice of your doctors. So summarizing my talk, I will say preserving the holiness, aesthetically extending technological advantages in developing scientific evidences, creating opportunities in future by keeping the heart, mind, and intuition all together receptive and in harmony for holistic wellness of mind, body, and spirit. Because these three things are taken into consideration only by Ayurveda, no other science. And for all of you in this really very stressed time, I wish to recite one Vishwa Prarthana, which is universal, and I will just recite and then I will come to the last slide. He Ishvara Sarvanna Sangli Buddhi De Arogya De Sarvanna Sukhat Anandat Aishwarya Thev Sarvansa Bhalakar Kalyan Kar Rakshan Kar Ani Tujhe God Naam Mukhat Akhand Raude. So thank you so much. I'm working with so many associations, and really those have whatever experience of last quarter century, we can say 25 years, has really made us very strong in this particular field, and has really made us good enough to help the Ayurvedic fraternity for bestowing their confidence in their own products and their pathy by generating evidences using the modern science. And thank you all of you, dear students. Again, congratulating all of you for taking up this very noble profession of Ayurvedic doctor. Thank you so much. Thank you, sir, for such a wonderful lecture. Sir had highlighted the very nicely the cosmic life force, well explained the human body, the base creation, and the difference between the organic and non-organic farming. Sir, thank you, sir, for your expert opinion on this topic. We are looking forward to having you again as our guest. Thank you very much. Thank you so much. Our next section is Vadatu Sanskritam by Dr. Kalyani Kale ma'am. Just a moment, miss. Are we allowed to interact with sir? Yes, sir. Yeah, if there are any questions, I would be happy to. Yes, sir. Sir, good afternoon. This is Dr. Raviraj Pardesi. I am professor in physiology here. Yeah, namaskar, sir. Namaskar, sir. Your slides were good. Content was too good, and the way you delivered it was far excellent. So I congratulate you and thank you at the same time. I have many questions, but I'll keep those reserved, and I will have face-to-face meeting with you. Sure, sure. But as of now, I have 3 connected questions. Yeah. If the modern pharmacology consider itself as enriched, why it failed to include this natural origin drugs pharmacology in it as a pharmacognosy as a separate branch? And if it has started studying that pharmacognosy as a separate branch, do you people refer to the Ayurvedic text as a valid source? If yes, to what extent, and with what determination? And if you find, or if you find something from the Ayurveda which is scientifically valid, do your people give 100% credit to Ayurveda, and that concept remains Ayurvedic concept only and does not transform itself into that modern concept? I hope you understood me. Yeah. Yeah, I really got it. And thank you so much for asking such a wonderful question. First of all, I would like to thank for the compliments that you give. And it is all because of my association with the Ayurvedic practitioners. Since 2005, I have been on the committee, ethical committee of Government Ayurveda College, and later on since 2010 with Pakwasa. And because of the continuous interaction with the great teachers from both the institutes, I could understand that yes, definitely we have to extend science to it, but not taking away the credit of Ayurveda. That is number one.
So when the question of pharmacology was found, you can refer Bhushan Patwardhan sir's, the systems biology. So he, along with his team in Pune, worked wonderfully well. Right now, he is a vice president of UGC, but he tried to extrapolate. See, when it comes to pharmacology in modern context, it is one molecule. And it is very easy for one molecule, how it is, connecting with the receptors in the body, how the trail of actions are going, and how the responses, those can be measured. Now, this was very easy for the allopathic system of medicine. They established the protocol according to the one single molecule and for one single disease. Now, when it comes to Ayurveda, people tried because Ayurveda is not a one single molecule therapy. It is a wonderful concoction. It's a wonderful mixture of so many phytoconstituents. Even if we say one plant, I will bet that not less than 200 phytoconstituents are present in the extract. Yes. Now, we just have to, simply compare one molecule against 200 molecules from one plant. And then if you go further, Ayurveda has, say, 7 plants, 8 plants, 50 plants in one single formulation. Now, connecting all those dots of expression of interest by each one of these molecules and then the reflexes by our body at different points, the picture was very gloomy. The science tried it. And I was really keen in knowing that. But let me tell you, science fell short of understanding all this phenomena. There was a very complex picture. वो जो एक मैंने आपको स्लाइड बताया था, एक गोला था, उसमें बहुत सारे तार लगे हुए थे. ये तो एक प्लांट के ही एक कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में एक assumed picture आया था सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से. The body is so unique. Each body is unique, and therefore the reflexes are going to be different. So therefore, I will straight away say that the pharmacology protocols made for the allopathic system of medicines cannot work for the Ayurvedic drug pharmacology establishment. Absolutely not. Second thing is, when we talk about this particular branch of pharmacognosy, why we enriched, it is only Nagpur University's pharmacognosy department which has got a tremendous applied experience because we are working along with the doctors, means the Vaidyas. All other pharmacognosy departments, even the CSIR laboratory who are working on, like that Ayush 64 and many other scientists I am working with, I have found that commitment level is really very low. But since I was connected with Ayurveda, I really tried to put maximum of our efforts into it, and therefore we have made the reference books like Ayurvedic Pharmacopoeia of India and formularies and even the Ayurvedic texts. But let me tell you that it is very difficult again. In Ayurvedic Pharmacopoeia of India, you can see one single plant and its standardization parameters are given. But when it comes to formulation, there is no standardized proforma that has been given. One single crude drug you can standardize and you can say, okay, this is good. But when it comes to a combination of so many, then what should be the quality picture of my product? That is still not clear. So that is another thing. And whatever thing that we are trying to do for Ayurveda, we really give the credit 100% to Ayurveda and not to modern science, because modern science is really very short of, they do not have the protocols for Ayurvedic systems of medicines. And this is the unfortunate time. I really wish to, focus this, highlight this from your platform, push across the Ayush department also, because everything in terms of research, they say, okay, which protocol you have tried? Anti-inflammatory. Okay. Whether you have followed the protocol that was prepared by XYZ scientist of foreign country. Why not? We should have our own protocol in our industry, in our India, for our Indian products. For that matter, CSIR laboratories, DBT, DST, all this should work in tandem to establish our own protocols and prove to the world that these are the systems which should be taken into consideration while standardizing our Ayurvedic products. That is where we are seriously lacking. So I hope that I could answer your yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you so much. And I am available. My laboratory is available every year. Yes, sir.
We'll be meeting you soon. We will see whether we can do something productive collectively. Yes, sure. Thank you so much. Thank you so much, sir. Our next session is Vadatu Sanskritam, Dr. Kalyani Kale ma'am. Since last 7 days, ma'am is being with us and now become one of our family members. I don't think we need her introduction. I kindly request ma'am to start her presentation. नमो नमः सर्वेभ्यः. नमो नमः आचार्य. नमो नमः महोदय. नमो नमः महोदय. नमो नमः महोदय. नमो नमः. अद्य किञ्चित् विलम्बः अभवत्, किन्तु पश्यामः. महोदयस्य सम्यक् आसीत् व्याख्यानं, किन्तु समयस्य मर्यादा भवति, अतः अद्य समापनम् आपतितं महोदयस्य. अस्तु, अहं स्क्रीन् शेर् कर्तुं शक्नोमि वा? सम्यक्. दृश्यते? आं महोदय. अस्तु, प्रार्थनां कुर्मः. वदामि संस्कृतं सदा. नैजं सर्वं ददाम्यहम्. संस्कृतस्य सदा भक्तो. वन्दे संस्कृतमातरम्. संस्कृतस्य कृते संस्कृतस्य कृते यजन्. आत्मानमाहुतं मन्ये. वन्दे संस्कृतमातरम्. वन्दे संस्कृतमातरम्. स्मरन्तु, गतदिने किं किं पठितवन्तः वयं? वदन्तु, किं किं पठितवन्तः वयं गतदिने? ह्यः, कल क्या पढ़ा था? स्मरन्ति वा? न स्मरन्ति? सप्तमी विभक्तिः. बहु सम्यक्. तर्हि किं तत्र किम् आसीत् वदन्तु? वृक्षे कपाटिकायां. सम्यक्, बहु समीचीनं. मन्दिरे. समीचीनं. नौका कुत्र अस्ति? नौका नद्याम् अस्ति. सन्ति. सम्यक्, समीचीनं. प्रयत्नं कुर्वन्तु. प्रयत्ने दारिद्र्यं मास्तु. प्रयत्न बहु सम्यक् करणीयः. सर्वदा प्रयत्नः उत्तमतया. तत्र संकोचः मास्तु. कपाटिका अस्ति, कपाटिका सन्ति. कपाटिका अस्ति, कपाटिकाः सन्ति. गतदिने वयं सप्तमी विभक्तिं पठितवन्तः. सर्वे द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा? एतद्वयं पठितवन्तः.
अस्तु सप्तमी विभक्ति प्रयोगः तर्हि हस्तः हस्ते शाला शालायां पुस्तके समीचीनं तर्हि अभ्यासं दत्तवती कुत्र किं किम् अस्ति स्थालिकायां किम् अस्ति कपाटिकायां किम् अस्ति स्पष्टं वा तर्हि एतादृशं वयं चिन्तनं कुर्मः इति आसीत् अस्तु तर्हि एकनिमिषम् अस्तु अग्रे गच्छामः अग्रे पश्यामः कथं भवति अत्र समस्या अस्ति तर्हि पृच्छन्तु अन्यथा अग्रे गच्छामः अत्र एकवारं किञ्चित् किं कुत्र कुत्र अस्ति इति वाक्यानि यदि वदन्ति तर्हि मम समाधानं भविष्यति भवन्तः ज्ञातवन्तः इति मार्गः अस्ति मार्गः सर्वे जानन्ति तर्हि मार्गे किं किम् अस्ति इति वदन्तु एकवारं मार्गे किं किम् अस्ति मार्गे वृक्षः मार्गे यानम् अस्ति मार्गे एकमेव वाहनम् अस्ति वा एकमेव यानम् अस्ति वा यानानि सन्ति बहु सम्यक् इतोपि मार्गे मनुष्यः अस्ति अस्ति वा न मनुष्याः सन्ति सम्यक् समीचीनम् उद्यानम् अस्ति उद्याने किं किम् अस्ति इति वदन्तु उद्याने उद्यानम् बालकाः सन्ति उद्याने बालकाः सन्ति अथवा उद्याने पुष्पं सन्ति आसन्दाः सन्ति अग्रे घटे सन्ति घटे अस्ति घटः अस्ति घटाः सन्ति वाक्यम् उद्याने किं किम् अस्ति अस्तु भवतां महाविद्यालये किं किम् अस्ति इति वदन्तु महाविद्यालये शिक्षक अस्ति एकः एव शिक्षकः महाविद्यालये कपाटिका सन्ति महाविद्यालये पुस्तके सन्ति महाविद्यालये कक्षाः सन्ति अस्तु कक्षायां किं किम् अस्ति आसन्दाः सन्ति कपाटिकाः सन्ति कृष्णफलकम् अस्ति प्राध्यापिका अस्ति पीठिका सन्ति पुस्तकानि सन्ति कुत्र वाक्यं पूर्णम् आवश्यकम् कक्षायाम् उत्पीठिकाः सन्ति कक्षायां छात्राः सन्ति कक्षायां व्यजनानि सन्ति आसन्दाः सन्ति समीचीनं सम्यक् अस्तु तर्हि घटी अस्ति कक्षायां घटी तर्हि घट्यां किं किम् अस्ति वदन्तु घट्यां सूची अस्ति
एका एव सूची अस्ति वा? सूच्यः सन्ति। सम्यक्। अग्रे घट्यां संख्या अस्ति वा? घट्यां संख्याः सन्ति। समीचीनं समीचीनम्। अस्तु, अधुना कः समयः? समयं वदन्तु। कः समयः? 12:30। 12:30 अहं किं पृष्टवती? कः समयः? तर्हि समयः सम्प्रति वयं चिन्तयामः 12:30 अस्ति। मम प्रश्नः कः? कः समयः? अस्तु, अत्र पश्यन्तु। अहं प्रातः 6:00 उत्तिष्ठामि। 6:00 इति न, यथा 12:30, किन्तु 12:30 रामेश्वरः संस्कृतं पठति। 12:30 ऋतुजा भोजनं करोति। कः समयः? 12:30। 12:30 किं करोति? एवमेव अस्माकं दिनचर्यां वयं चिन्तयामः। अहं प्रातः उत्तिष्ठामि। कदा उत्तिष्ठामि? 6:00। 6:00 न उत्तिष्ठामि। 6:00 अत्र 6:00 यथा मार्गे, हस्ते, गर्गे, देशे, मुखे, मस्तके एवं वादने इति अर्थः भिन्नः। तर्हि अहं 6:00 उत्तिष्ठामि। भवान् कदा उत्तिष्ठति? तर्हि अहं 6:30 उत्तिष्ठामि। उत्तरं किम् आगच्छति? 6:30 उत्तिष्ठामि न आगच्छति। उत्तरं भवति अहं 6:30 उत्तिष्ठामि। आंचल कदा उत्तिष्ठति? 7:30 उत्तिष्ठति। अहं 7:30 उत्तिष्ठति। अहम् अस्ति तर्हि सर्वं मि 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 आगच्छति। अहम् उत्तिष्ठामि, अहं गच्छामि, अहं पठामि, अहं वदामि, अहं स्मरामि। अहम् उत्तिष्ठति अयोग्यम्। अहम् उत्तिष्ठामि, किन्तु अहं 7:30 उत्तिष्ठामि। 7:30 उत्तिष्ठामि न। प्रश्नः कः अस्ति? कदा? कदा उत्तिष्ठति? कदा खादति? कदा लिखति? कदा स्मरति? कदा निद्राति? कदा हसति? एवं यदा प्रश्नः भवति तदा 6:30 5:00 सपादपञ्चवादने इति उत्तरम् आगच्छति। यदा वयं कदा इति प्रश्नं कुर्मः, कदा खादति? किन्तु कः समयः? तर्हि समयं वदामः। कः समयः? 11:00। कः समयः? किन्तु कदा इति प्रश्नः भवति तदा वादने आगच्छति। वादनम् इति स्पष्टं वा? आम् महोदय। सम्यक्। अग्रे भवान् कदा भोजनं करोति? अहम् 1:00 भोजन वादने। अहम के साथ क्या आता है? मी 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 मी।
अहम् एकवादने भोजनामि अहं करोति wrong अहं करोमि अहं एकवादनं करोमि एषः वदति अहं एकादशवादने भोजनं करोमि एकादशवादने भवती कदा विद्यालयं गच्छति अहं नववादने विद्यालयं गच्छामि बहु सम्यक् एतदेव आवश्यकं प्रश्नं श्रुत्वा उत्तरं कथं दातव्यम् इति एव स्पष्टमस्ति पश्यतु अहं नववादने विद्यालयं गच्छामि अत्र पश्यतु भवान् कदा पठति पाठं वादने पठन्तु दशवादने पाठं पठामि अग्रे किमस्ति भवती कदा दूरदर्शनं पश्यति अष्टवादने दूरदर्शनं पश्यामि अहं सप्तवादने दूरदर्शनं पश्यामि सप्तवादने अधुना वयं परस्परम् अधुना प्रश्नं कुर्मः यथा शिक्षिता भवती कदा भोजनं करोति वदतु अहम् एकवादने एकवादने भोजनं करोमि सम्यक् समीचीनम् अग्रे गौरी गौरी वीडियो ऑन कुर्वन्तु यस्य नाम स्वीकरोमि सः वीडियो ऑन करोतु मैम वो वीडियो से लॉग आउट हो जाता है मेरा इसलिए चिन्ता नास्ति हाँ अस्तु कुत्र अस्ति हाँ गौरी भवती कदा अभ्यासं करोति अहं सार्धसप्तवादने अभ्यास करोमि क्षितिजा भवती हाँ वीडियो हाँ महोदय हाँ वीडियो क्षितिजा का अस्ति क्षितिजा भवती कदा वर्तमानपत्रं पठति अहं सार्ध अष्टवादने वर्तमानपत्रं पठामि सम्यक् रोहिणी काय तिकडे ते टीव्ही वाजायली इकडे महोदय भवती कदा अल्पाहारं करोति अल्पाहार नाश्ता अहं नववादने अल्पाहारं करोमि सम्यक् नववादने अल्पाहारं करोमि सम्यक् अस्तु प्रथमेशः अस्ति वा आम् महोदय हाँ प्रथमेशः भवान् कदा क्रीडति आं पञ्चवादनं क्रीडामि हाँ अहं पञ्चवादनं क्रीडामि न अहं पञ्चवादने क्रीडामि आं पञ्चवादनं क्रीडामि पञ्चवादनं न पञ्चवादने क्रीडामि हाँ अनन्तरम् अहम् इति अस्ति आम् इति भिन्नम् अहम् इति भिन्नम् पुनः वदतु अहं पञ्चवादने क्रीडामि हाँ अधुना पञ्चवारं वदतु
अहम अहं पंचवादने क्रीडामि अहं पंचवादने क्रीडामि अहं पंचवादनं क्रीडामि पुनः वादने इति अस्ति अहं पंचवादने क्रीडामि अहं पंचवादने क्रीडामि अहं पंचवादने क्रीडामि इतोपि एकवारं पुनर्दोषं कृतवान् अतः पञ्चवारं पुनः द्विवारमेव अभवत् अहं पंचवादने क्रीडामि अहं पंचवादने क्रीडामि अहं पंचवादने क्रीडामि सम्यक् अस्तु तर्हि अत्र रामेश्वरः आं महोदय अत्र कबीरः अस्ति वा आं महोदय रामेश्वर कबीरं पृच्छतु वीडियो ऑन करोतु कबीर वीडियो ऑन कृत्वा परस्परं पृच्छतु भवान् कदा किं करोति भवान् कदा क्रीडति भवान् कदा उत्तिष्ठति कदा भवान् गच्छति कदा विद्यालयं गच्छति एवं प्रश्नान् कुर्वन्तु परस्परं रामेश्वरः कबीरं पृच्छतु कबीर भवान् कदा उत्तिष्ठति पृच्छतु भवान् कबीर भवान् कदा उत्तिष्ठति अहं सप्तवादने उत्तिष्ठामि भवतु नाम और अग्रे पृच्छतु रामेश्वर भवान् कदा खादति अहम् एकवादने खादामि कबीरः अधुना भवान् पृच्छतु रामेश्वरम् कदा पठामि पठति दूसरों के लिए कदा पठति अहं सप्तवादने पठामि सम्यक् कबीर पृच्छतु रामेश्वर कदा क्रीडति अहं पंचवादनं क्रीडामि कदा क्रीडति कदा पंचवादने अहं पंचवादने क्रीडामि सम्यक पंचवादने ये वादनम कब बोलना है और वादने कब बोलना है इसमें कंफ्यूजन है ना वादनम अधुना कः समयः अधुना एकवादनम् अस्ति एकवादनम किन्तु एकवादने अहं भोजनं करोमि एकवादने वादने यदा काचित् क्रिया तत्र भवति स्पष्टम् अस्तु नेहा रोहिणी भवतां वीडियो ऑन कुर्वन्तु नेहा नास्ति वा अस्तु नेहा रोहिणी परस्परं पृच्छन्तु कदा किं किं करोति इति रोहिणी भवती कदा अल्पाहारं करोति अहं नववादने अल्पाहारं करोमि आपका प्रश्न क्या था न भवती पृच्छतु असा अनन्तरं पृच्छति ओके भवती कदा उत्तिष्ठति अहं 7:30 उत्तिष्ठामि भवान् कदा पठति भवती कदा पठति अहं 7 पठामि नेहा अधुना पृच्छतु रोहिणी भवती कदा दूरदर्शनं पश्यति बहु सम्यक् अहं 8 दूरदर्शनं पश्यामि
सम्यक्। भवती कदा क्रीडति? अहं 5 क्रीडामि। सम्यक्। रोहिणी भवती कदा भोजनं करोति? अहं 1 भोजनं करोमि। बहु सम्यक्, बहु उत्तमम्। अस्तु, तर्हि अद्य भवन्तः स्वयमेव चिन्तयन्तु, अहं स्वयं कदा कदा किं किं करोमि। अधुना अहं मम दिनचर्यां वदामि। केवलं सत्यमेव वक्तव्यम् इति किमपि नास्ति। भले आप हर दिन 9 बजे उठ जाए, किन्तु अहं 6 वादने उत्तिष्ठामि इति वदन्तु, चिन्ता नास्ति। वाक्यम् आवश्यकम्। तत्र सत्यं वदन्तु वा असत्यं वदन्तु, चिन्ता नास्ति। अहं 6 वादने उत्तिष्ठामि, अहं सपाद 6 वादने दन्तधावनं करोमि, अहं 6:30 वादने चायं पिबामि, अहं 7:15 वादने भ्रमणं करोमि, अहं 8:30 वादने गृहम् आगच्छामि, अहं 9 वादने स्नानं करोमि, सपाद 9 वादने अहं देवं नमामि, पादोन 10 वादने अहं श्रूयते वा अधुना? अस्तु, तर्हि पादोन 10 वादने अहम् अल्पाहारं करोमि, अनन्तरम् अहं महाविद्यालयं गच्छामि, महाविद्यालये अहं 2 वादने भोजनं करोमि, 5:30 वादने गृहम् आगच्छामि, 6 वादने अहं गृहकार्यं करोमि। अस्तु, तर्हि अनन्तरं 7:30 वादने अहं पाकं करोमि, 8 वादने अहं दूरदर्शनं पश्यामि, 8:30 वादने अहं भोजनं करोमि, 9 वादने अहं पुस्तकं पठामि, 10 वादने अहं निद्रां करोमि अथवा निद्रामि। एवं दिनचर्या अस्ति। अद्य भवन्तः अपि कुर्वन्तु। कः स्वस्य दिनचर्यां वदति? वक्तुम् इच्छति वा? प्रयत्नं कर्तुम् इच्छति? कः कदा किं किं करोति? अहं 10 वादने भोजनं करोमि, 11 वादने चायं पिबामि, 12 वादने समोसां खादामि, 1 वादने पिज्जां खादामि। आदिनं किं कुर्वन्ति? गृहे सन्ति खलु? गृहे सततं भोजनं खादनमेव प्रचलति। अतः वदन्तु, चिन्ता नास्ति। कः वदति? सर्वप्रथमं कः वदति? स्वयं भूत्वा वदन्तु। अहं प्रातः 5 वादने उठने को क्या बोलते? उठने को क्या बोलते? उत्तिष्ठामि।
अनन्तरं किं करोति क्षितिजा? अहं सार्धपञ्चवादने दन्तधावनं करोमि। अनन्तरं किं करोति? अहं 6 वादने योगां करोमि। योगासनं करोमि। सम्यक्। अग्रे? अहं 6:30 वादने नाश्ता करोमि। नाश्ता अल्पाहारं करोमि। अस्तु। अत्र आलम् अस्ति वा? आलं नास्ति, अनुपस्थितः। अस्तु, कः अस्ति अत्र? लक्ष्यकुमार अस्ति? नास्ति? आं महोदय। लक्ष्यकुमार, भवान् किं करोति इति वदतु। अहम् अल्पाहारं 7 वादने करोति। अहं करोति न अहं करोमि। अनन्तरं किं करोति? वदतु शीघ्रम्। अहम् 1 वादनं भोजनं करोमि। कदा भोजनं करोति? 1 वादनम्। 1 वादने। वेदः वादने। 1 वादने भोजनं करोमि। एवं अहं प्रातः 8 वादने पूजनं करोमि। भवान् वा भवती कदा पूजनं करोति? वदन्तु। अहं 7 वादने पूजनं करोमि। सम्यक्, अहं 7 वादने पूजनं करोमि। अन्यः अहं 8:30 वादने पूजनं करोमि। 8:30 वादने पूजनं करोमि। सीफा कदा पूजनं करोति? अहं 1 वादने पूजा करोमि। 1 वादने पूजां करोमि। सम्यक्। वा पूजनं करोमि। बहु समीचीनम्। अस्तु, अग्रे। अहं 9 वादनं पूजां करोमि। वादनं न, वादने। 9 वादने पूजनं करोमि। सम्यक्। 9 वादने पूजा करोमि। अहं 5 वादनं पूजनं। 5 वादने इति न भवति। 5 त्रीणि 4 5 वादने पूजनं करोमि। किमपि। अग्रे। अहं प्रातः 8:30 वादने अल्पाहारं करोमि। तर्हि भवती कदा अल्पाहारं करोति? भवान् कदा अल्पाहारं करोति? वदन्तु। अहं प्रातः 9 वादने अल्पाहारं करोमि। सम्यक्। अहं प्रातः 8:30 वादनं अल्पाहारं करोमि। 8 वादने। अहं प्रातः 8:30 वादने अल्पाहार करोमि। 8:30 वादने 8:30। अहं प्रातः 8 वादने अल्पाहारं करोमि। सम्यक्, समीचीनम्। एषः युवकः 8 वादने 6:30 वादने
मैम आवाज नहीं आ रहा। अधुना आगच्छति वा? श्रूयते? आ रहा है? हाँ मैम। मेरा नेटवर्क पूरा है। हाँ हाँ मैम अब आ रहा है। हाँ, अष्टवादने स्नानं करोति युवकः करोति। युवकः सप्तवादने योगासनं करोति। अहं सप्तवादने योगासनं करोमि। करोति अहं करोमि। उत्तिष्ठति अहं तिष्ठामि। सम्यक्। अग्रे युवकः कदा अल्पाहारं करोति? युवकः सार्ध अष्टवादने अल्पाहारं करोति। युवकः कदा कार्यालयं गच्छति? युवकः 9 कार्यालयं गच्छति। युवकः कदा चायं पिबति? युवकः 5 वादने पिबति। युवकः कदा क्रीडति? युवकः 6 वादने क्रीडति। सम्यक्। युवकः कदा दूरदर्शनं? युवकः सार्ध 7 वादने दूरदर्शनं पश्यति। 7:30 वादने पश्यति। कदा भोजनं करोति? युवकः 8 वादने भोजनं करोति। युवकः कदा पुस्तकं पठति? युवकः 9 वादने पुस्तकं पठति। पुस्तकं पठति। अग्रे युवकः कदा निद्राति? युवकः 10 वादने निद्राति। निद्रां करोति। निद्रति। युवकः 10 वादने निद्रां करोति। अस्तु, कस्यचन दिनचर्या, रामस्य दिनचर्या कः पठति? रामः पंचवादने उत्तिष्ठति। 6 वादने योगासनं करोति। स्नानं करोति। 9 वादने अध्ययनं करोति। 10 वादने अल्पाहारं करोति। 9 वादने अल्पाहारं करोति। अल्पाहारं न अल्पाहारम्। अतः अस्तु, अत्र योगासनं तत्र किमस्ति? अनुस्वारः अस्ति। अतः 6 वादने योगासन न करोति, योगासनं करोति। 7 वादने स्नानं करोति। तत्र किं पश्यन्तु, अनुस्वारस्य उच्चारणं कुर्वन्तु यदि तत्र अस्ति तर्हि। अग्रे वदतु, अग्रे पठन्तु सर्वे। दशवादने विद्यालयो गच्छति। 10 वादने भोजनं करोति। 10 वादने भोजनं करोति। 11 वादने गृहम् आगच्छति। 12 वादने दूरदर्शनं पश्यति। 12 वादने दूरदर्शनं पश्यति। अधुना अहं प्रश्नं वाक्यं वदामि, भवन्तः प्रश्नं कुर्वन्तु। रामः प्रातः उत्तिष्ठति। प्रश्नं कुर्वन्तु। रामः कदा वादने उत्तिष्ठति? कदा उत्तिष्ठति? रामः प्रातः कदा उत्तिष्ठति?
प्रातः कदा उत्तिष्ठति षड्वादने योगासनं करोति। रामः कदा योगासनं करोति। रामः स्नानं कदा करोति? रामः सप्तवादने स्नानं करोति। स्नानं करोति। तर्हि कदा कुत्र इति जलं कुत्र तर्हि जलं चषके अस्ति अत्र आगच्छति कदा इति प्रश्नः अग्रे गच्छामः। अवशिष्टम् राम कदा उत्तिष्ठति। गणेशः कदा कार्यालयं गच्छति। मुनिः कदा ध्यानं करोति। सीता कदा भोजनं पचति। मोहनः कदा गृहम् आगच्छति। गौरी कदा विद्यालयं गच्छति। बहु सम्यक्, उत्तमम्। अत्र अस्ति भवान् अहं सार्धषड्वादने पूजनं करोमि। भवान् कदा पूजनं करोति। सम्यक्। भवान् कदा मन्दिरं गच्छति। भवान् कदा क्रीडति। भवान् सायं कदा क्रीडति। भवान् कदा विद्यालयं गच्छति। भवती कदा आगच्छति। कः सः कदा आगच्छति। सः कदा आगच्छति। कः नववादने। सा कदा वादने गीतं गायति। तर्हि एवं भवताम् उत्तराणि उत्तमानि सन्ति। अस्तु, वासराणां नामानि। कः समयः अस्ति? एकवादनम्। गुरुवासरः। मंगलवासरः। शुक्रवासरः। शुक्रवासरः शनिवासरः मंगलवारः सप्ताह भानु इत्युक्ते रविः सूर्य। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो वार के बीच में डाल दो स, यानी सोमवासरः कठिनं नास्ति, सरलम् अस्ति। अद्य कः वासरः? गुरुवासरः। अस्तु। भानुवासरः, सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः। सम्यक् सम्यक्। गुरुवासरः। तर्हि क्रमेण योजयन्तु। क्रमेण वयं सोमवासरः,
मंगलवासरः गुरुवासरः शुक्रवासरः शनिवासरः भानुवासरः। हाँ, भानुवासरः अर्थात रविवासरः। अद्य गुरुवासरः अस्ति। अद्य गुरुवासरः अस्ति। गुरुवासरे व्रतम् अस्ति। गुरुवासरे अहं मन्दिरं गच्छामि। गुरुवासरे अहं साबुदाना खिचडीं खादामि। गुरुवासरे अहं फलानि खादामि। गुरुवासरे अहं जलं न पिबामि। गुरुवासरे एवं यथा वादने इति वयं पठितवन्तः। सप्तमी आधारेण एषा वाक्यरचना भवति। अतः तदपि भवन्तः जानन्ति। अत्र वयं समापयामः। श्वः समये मिलामः। एकवादने। अधुना कः समयः अस्ति? एकवादने अस्माकं वर्गसमाप्तिः भवति। सपाद एकवादने मम अन्यः वर्गः अस्ति। अतः नमामि। श्वः पुनः मिलामः। तर्हि सर्वे प्रार्थना कुर्वन्तु। सर्वे भवन्तु सन्तु निरामयाः। सर्वे सन्तु निरामयाः। भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पुनर्मिलामः महोदय। पुनर्मिलामः महोदय। पुनर्मिलामः। धन्यवादः। तर्हि श्वः पृच्छन्तु। थैंक यू मैम। आज जरा ये हो गया टाइम, थोड़ा देर हो गया। उनका चालू था इसलिए, लेकिन मुझे 1 बजे अभी निकलना ही होगा, इसलिए मैंने एक्सटेंड नहीं कर पाई मैं अभी। नो प्रॉब्लम मैम, नो इशू। थैंक यू वेरी मच। शुभ दिनम। So student, there is a lunch break for 1 hour. We will meet soon at 2 p.m. sharp. Good day. Okay, ma'am. Okay.